इधर भी सामान आ गया धीरे धीरे पता हम लोग स्पीकर के पोजीशन संभालते हुए और दोनों अपना करीब पहुंच चुके हैं। बॉलर की तरफ से बिल्कुल समझ जा सके बॉल को बैट्समैन वहाँ बीट हुए। कुछ अंपायर से पूछेंगे स्कोर बॉलर अपनी स्टार्ट पे वापस रेडी, बैट्समैन भी तैयार दूसरी बॉल के लिए। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत ही खूबसूरत बॉल की और कीपर से मिस हुई और बॉलिंग में जा रही है पीछे। थर्ड मैन के भीतर भागते हुए आए, उन्होंने बॉल पकड़ी और कीपर को डर की। इस असना में बाई का एक रन बना। एफएफटीके का मजमूई तौर पे 2 रन हो चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तैयब और फिरदौस इन्होंने एफएफटीके की तरफ से इनिंग्स का आगाज किया है और बॉलिंग जुनैद लेकिन कर दिया कि बॉलर बैट्समैन ही बहुत अच्छा है, शक्ल से वो नहीं लग रहा। बॉलर जो जुनैद अब तक 1 बॉल की हुई है। जुनैद अपनी अगली बॉल के लिए तैयार, भागते लगे, अंपायर क्रॉस किया बॉल की और ये बहुत अच्छा कट लगा। आउटस्विंग बॉल थी, बाहरी किनारे लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में और पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। तैयब पहली की तरफ वापस। तैयब एक बहुत ही जबरदस्त इनके बैट्समैन थे, बहुत अच्छी कामयाबी मिली है एनसीसी को। पहले ही ओवर की दूसरी विकेट के ऊपर बॉल आउटस्विंग होकर जरा थोड़ी सी बाहर गई। मिडल के ऊपर से कर सकते हैं दूसरी बॉल पर पहली विकेट ले ली इन्होंने और को पहला नुकसान को पहला नुकसान हुआ। तैयब
नहीं ऐसा परफॉर्म करते बिग विकेट है इनके लिए एफएमडीके के लिए और अमीर क्रिकेट क्लब को इनकी विकेट जो है वो लेनी होगी अगर इन्हें मैच को लेके करना है। लेकिन अगर आप देखें तो अगले जो बैट्समैन अकील फाखर हैं ये पिछले दोनों मैचेस के मैन ऑफ द मैच हैं। अकील फाखर पिछले दोनों मैचेस के मैन ऑफ द मैच हैं। ये भी विकेट पर आए हैं भी। जुनैद अपनी अगली बॉल की तैयार होते हुए गए, बहुत ही खूबसूरत बॉल सामने से रुका और सिंगल पे ले लिया। थोड़ा मुख्तार अंदाज से एफएमडीके ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया है। ये वैसे इनकी स्ट्रेटजी की बचत रही है। पहला ओवर बहुत ही मुख्तार और करते हैं। जुनैद 3 बॉलें कर चुके हैं, अब तक सिर्फ 3 रन से बनी है। और 3 रन हो चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पे जो स्कोर भी चल रहा है। दिस इज नॉट समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एफएमडीके। ओवर द विकेट जुनैद आए, बहुत ही खूबसूरत बॉल की और विकेट और फील्डर की सामने बॉल गिर गई और बॉल तक नहीं पहुंच सके। 1 रन का इजाफा, मजबूत तौर पर स्कोर हो गया 4। बहुत अच्छी बॉल थी, कोशिश की उन्होंने कि कॉर्नर डीप विकेट के ऊपर से छक्का लगाए, मगर लगता है बॉल मुकम्मल तौर पर उनके बैट पर नहीं आई। अपनी 5वीं बॉल के लिए जुनैद तैयार। थोड़ी फील्ड्स एडजस्टमेंट की जा रही है क्योंकि अब सामने जो बैट्समैन हैं राइट हैंड हैं अकील फाखर, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, और उन्होंने स्विच किया और उल्टे हाथ से पॉइंट की तरफ मार दिया। 2 रन का इजाफा, 3 से 2 मिल गया उन्होंने। बॉल मुकम्मल तौर पर बैट पे नहीं आई, लेकिन चूंकि वहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे इसलिए इनको 2 रन आसानी से मिल गए। इसका स्कोर बढ़ता हुआ 6। कालिम भाई, मैं आपको ये अकील की एक बात बताना चाहूँ कि कल मैं लेग अंपायर खड़ा हुआ था, तो राइट हैंड बैट्समैन है और आपने भी देखा होगा कल लेफ्टी होके तो 6 लगा रहे थे, बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से लगा रहे थे। और यही 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो आज देखते हैं कि ये टीम की मीटिंग कर पाते हैं कि नहीं। अभी इनको चांस मिला है, बहुत ही क्लोज ही कैच था, लेकिन फील्डर ने कोशिश नहीं की। तो अब देखना हो कि बॉलर को क्या हो गया है। इसमें आवाज सब जाएगी, रिकॉर्डिंग में ये दिखाएगा। जुनैद ग्राउंड पे नेटिव हैं, मेरा ख्याल है कुछ इशू है, अभी थोड़ी देर पता चलेगा। इट्स अ सेटबैक फॉर द फील्डिंग टीम। हसन, ये जो भी शॉट खेला था अकील फाखर ने, ये एक्चुअली एक रिवर्स स्वीप या रिवर्स शॉट नहीं कर सकते, ये स्विच ओवर किया था उन्होंने, कंप्लीटली स्विच ओवर खेला है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में एक्सपर्टीज में? डेफिनेटली ये काफ़ी इंट्यूटिव शॉट था जो बैट्समैन ने खेला। ये आप ऐसे शॉट आप हार्ड बॉल में कभी नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो वो अलग ही किस्म की बैटिंग होगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे शायद देखेंगे ऐसे शॉट, और मोस्ट प्रॉब्ली स्पिनर पे होंगे, वो फास्ट बॉलर पे आपको नहीं मिलेंगे। मगर ये बॉल फुल टॉस था और ये डिस्पैच होना चाहिए था छक्के के लिए। तो आई थिंक अभी क्रिकेट और इम्प्रूव, अभी 2nd ओवर की पहली बॉल होने वाली है, सॉरी फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल है। बॉल अपने रन में स्टार्ट कर रहे हैं, ये बॉल गई कवर की तरफ और ये होगा एक सिंगल। स्ट्राइक चेंज होती है, 2nd ओवर अभी करेंगे बॉलर। दिखा देंगे, मैं देख रहा था ना वो नाम किसका है, अभी इधर अपडेट नहीं किया क्योंकि उसकी जगह पे एक बॉल कराने गया था, वो जख्मी हो गया था ना, ही वाज इंजर्ड। सेकंड बॉलर कौन है? अभी आते हैं 2nd बॉलर बॉलिंग करने आते हैं। अभी ये पहला ओवर काफ़ी कॉशियस तरीके से बैटिंग साइड ने खेला है,
काफ़ी वॉचफुल रहे पिच के हवाले से, देख रहे थे कि कैसी पिच है, कैसे बिहेव करेगी। अपनी अभी शॉटें उन्होंने रोकी हैं, पूरी शॉटें नहीं खेली। अभी अगले ओवर में सही पता चलेगा कैसे फायरवर्क्स होंगे बैटिंग साइड की तरफ से। सेकंड बॉलर आते हैं, इनका नाम है अबू बकर अजीज। ये अभी अपना रन अप मार्क कर रहे हैं और आगे बैटिंग कर रहे हैं अकील फ़खर साहब। ये लास्ट 2 मैचेस से मैन ऑफ द मैच रहे, तो ये काफ़ी अच्छा मैचअप होगा। बॉलर अपना रन मार्क करते हुए पीछे अगर आप देखें वहां कैमरा क्रू भी बैठी हुई है, पूरा लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, सब देख रहे हैं वो लोग पूरे। हम आपको ये पूरी मैच की प्रॉपर कवरेज दिखा रहे हैं। बॉल अपनी फील्ड सेट करते हुए काफी सीरियस लग रहे हैं, लगता है कुछ अलग ही किस्म का जादू दिखाने वाले हैं। बहुत उम्दा बॉल अबू बकर की तरफ से। इस बॉल पर 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8, 1.1 ओवर्स। FMDK की पूरी टीम की नज़रें उनके मेन प्लेयर अकील फ़खर पर हैं। उनका चलना और इस बड़े मैच पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। अबू बकर अपने बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद, फेस करेंगे फिरदौस। अबू बकर अपने बॉलिंग स्टार्ट पर रन आउट हो सकता है, देखना होगा। और ये 2 रन पूरे किए दोनों बैट्समैनों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रन के साथ स्कोर 10। ज़रा रनिंग को भी बड़े एहतियात से करना होगा, विकेट यहाँ पे गंवाना इनके लिए मुश्किल साबित कर सकता है। अबू बकर फील्डिंग को सेट करते हुए अबू बकर अपने बॉलिंग स्टार्ट पर फेस करेंगे फिरदौस। बहुत उम्दा बॉलिंग अबू बकर की तरफ से। इस बॉल पर भी ओनली 1 रन बन सकेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर 11। दूसरे ओवर की 3 बॉलों के इख्तिताम पर स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। ये पिक कर लेगा। बहुत उम्दा बॉलिंग अनीक क्रिकेट क्लब की तरफ से। बिल्कुल बॉल को समझ नहीं पा रहे और कोई बाउंड्री इस टाइम तक नहीं। अपने ओवर की 4थी बॉल करने के लिए अच्छी शॉट के लिए देखना होगा फील्डर, सीधी फील्डर के हाथों में। और 1 रन बॉल में इजाफा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12। 1.4 ओवर के काम पर स्कोर 12 और 1 विकेट के नुकसान पर। और सामने भी आ रहा है। फिर 4 बॉल पर 2 रन पर खेलते हुए अकील फ़खर 5 बॉल पर 5 रन पर फेस करेंगे फिरदौस। बॉलर स्टार्ट पर अबू बकर। अच्छी बॉल अबू बकर की तरफ से और 1 रन का इजाफा और लेग बाय उमर का इशारा, लेग बाय का 1 रन लिया FMDK ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13। लास्ट बॉल बैट्समैन अबू बकर अपने ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार की तरफ बढ़ते हुए। इधर आ जाए बैट्समैन। बॉलर अपनी फील्डिंग को चेंज करते हुए क्योंकि सामने राइट हैंड बैट्समैन फेस करेंगे अकील फ़खर। अभी तक बहुत उम्दा बॉलिंग अनीक क्रिकेट क्लब की तरफ से। अच्छी बॉल और अच्छी शॉट के लिए, लेकिन 1 रन का इजाफा हो पाएगा।
इस 1 रन के साथ 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 14, 1 विकेट के नुकसान पर। ये ट्रफ हो रहा है मैच। आज के और कल के जो राउंड मैचेस में एक बुनियादी फर्क जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि कल के सारे मैचेस सिमट विकेट पे हुए थे और आज का जो ये मैच है ये हो रहा है ट्रफ के ऊपर। तो ज़ाहिर है ट्रफ का अपना एक बाउंस होता है, अपना एक तरीका होता है और मेरा ख्याल है शायद इस वजह से बहुत बड़ी रुक आ रही है और बैट्समैन जो है वो टाइम नहीं कर पा रहे, जबकि सिमट के ऊपर जो है बॉल बहुत अच्छी तरह बैट के ऊपर आता है और छक्के लगाने काफ़ी आसान होते हैं। तो आज बैट्समैनों के लिए मजमूई तौर पे एक टेस्ट होगा उनकी स्किल का, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन का एक टेस्ट होगा। बैट्समैन बॉलर चेंज बॉलिंग राइट आर्म ओवर लेकिन अकील फ़ाखर जो है वो अब तक पिच की पेस को जज कर लिया हुआ उन्होंने और बहुत जल्दी हमें कल की तरह का फायरवर्क्स जो है वो देखने को मिलेगा। बॉलर अब पहली बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, ग्राउंड शॉट था, सीधी फील्डर के हाथ में, एक ही रन बना पाएंगे। एंड द स्कोर मूव टू 14-15 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट in 2.1 overs. Firdaus is on 2 out of 5 balls. अकील फ़ाखर 7 of 7 balls. हैरत की बात है कि अब तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी। This is not something we are expecting from FMTK. Firdaus left arm batsman, बहुत ही अच्छी बॉल थी, थोड़ी सी गुड लेंथ से उठती ऊपर आई, खेल दिया मिड विकेट की तरफ, सीधा फील्डर के हाथ में, सिर्फ एक ही रन बनेगा। मजबूरी तौर पे स्कोर हो गया है 16, उनके लिए फायदा था 16 for 1 ये फ्री वो उधर in 2.2 overs। एनिक सेसी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए बहुत अच्छा कंट्रोल रखा हुआ मैच का। ग़ालिबन अगर हमें परसेंटेज का पता चल सके तो अंदाजा होगा कि इस वक्त मैच किस तरफ है। अगली बॉल फुल टॉस बॉल थी, खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, पहले रन के लिए भागे, दूसरा बहुत तेज से लेंगे और रन खतरा, मगर विकेट कीपर क्लीनली बॉल को रिसीव नहीं कर सके, उनके हाथ से बॉल मिस हुई, इसी स्नाम में दूसरा रन मुकम्मल किया। एंड नाउ द स्कोर हैज मूव टू 18 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट इन 2.3 ओवर्स। दूसरा बॉल मंगवा लीजिए, बॉल बॉलर थोड़ा बैठ गए हैं अकील फ़ाखर। आज फिटनेस का भी टेस्ट होगा। नो बॉल पे कह रहे हैं, नो बॉल है, कह रहे हैं नो बॉल है, लेकिन वो चेक करेंगे अभी थर्ड अंपायर चेक करेंगे। अंपायर इज चेकिंग फॉर द नो बॉल। कि पिछली जो बॉल थी वो ऐसा लग रहा है दूर से शायद वेस्ट, लेकिन सही तौर पे पता चलेगा कैमरे से क्या है वेस्ट आई थी या नहीं थी। सो अंपायर जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। अनिक सेसी ने अब तक नो बॉल पिच का बहुत ही जबरदस्त, और ये नो बॉल फीड होगी, फ्री हिट और एक बोनस बॉल मिली है। सामने है अकील फ़ाखर स्कोर 19 हो गया और स्कोर इस तरह बढ़ता हुआ 19। क्या हुआ अब देखें, सर जी, थर्ड अभी तक अंपायर है, लेग अंपायर नहीं हम है तो छक्कों का इंतजार कर रहे थे कि चौका भी नहीं लगा। सर जी, थर्ड अकील अंपायर से है, थर्ड अंपायर है। दरखास्त है कि हमें मायूस ना करें। फ्री हिट का वार्म अप करते हुए, बैट्समैन फ्री मसल्स को रेडी करते हुए, चारों तरफ देखते हुए कि कौन कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा है। अली रजा कुछ इंस्ट्रक्शन लेने के बाद उस्मान मलिक से अपनी अगली बॉल के लिए तैयार। फ्री है सर, बोला तो अकील फ़ाखर कुछ कंफर्म करते हुए 19 है, 19 वो इस बोनस बॉल का बहुत भरपूर तौर पर फायदा उठाना चाहते हैं। इज रेडी और अगली बॉल की उन्होंने, बहुत ही अच्छी बॉल थी और ग्राउंड से बाहर, पहला छक्का।
आज के मैच का पहला छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से होता हुआ सीधा ग्राउंड से बाहर, जैसा कि अकील से एक्सपेक्टेड था, नो बॉल का फायदा उठाया और नो बॉल का भरपूर फायदा उठाते हुए उसका स्कोर पहुंच गया है 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगले बॉल के लिए फिर तैयार। बहुत अच्छी बॉल थी, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी। रन नहीं होगा। अंपायर ने इसको डेड करार दे दिया है। उन्होंने डेलिबरेटली बैट किया था, कहता ये भागा जाने वाला रन कंसीडर नहीं होगा। बॉल भी कंसीडर नहीं होगी या होगी? नहीं बॉल भी नहीं होगी, डेड बॉल में हर रन नहीं, रन भी नहीं, बॉल भी नहीं होगी। ये बॉल तो दी है अंपायर। अरे बॉल तो दी है, बैट किया है। नहीं अकील फाखर 15 of 10 balls, very unexpected. फिरदौस 3 of 6 balls. अली रजा अपनी 5वीं बॉल के लिए तैयार, बॉल को रगड़ते हुए तेज से भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की अकील को, और अकील का बहुत ही खूबसूरत शॉट, हवा में बॉल है, कोई फील्डर बिल्कुल नीचे है, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, बहुत बड़ी विकेट हासिल की अनीक सीसी ने। 2 दफा का मैन ऑफ मैच, 15 रन बनाने के बाद ग्राउंड से बाहर। ज़रा थोड़ी विकेट की सिचुएशन डिफरेंट है, थोड़ी स्लो विकेट है, बॉल उस तरह बैट पे नहीं आ रहा जैसे कल आ रहा था, लेकिन अकील ने अपनी तरफ पूरी कोशिश की। जब उनको मौका मिला जरा सा शॉर्ट बॉल का, तो उन्होंने गेंद को बॉल से ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। लेकिन अब वो 15 रन बनाने के बाद पेविलियन में वापस। वैसे वसीम साहब ये एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे अकील से। हम तो आज छक्कों की बारिश ग्रीन ग्राउंड के ऊपर देखने वाले थे, तो आप क्या समझते हैं क्या ऐसा हुआ होगा मुख्तलिफ कल के मुकाबले में? लास्ट बॉल अच्छा तुम वही जैसे कि मैच के स्टार्ट में भी कहा था कि क्रिकेट बाई चांस गेम है, किसी मैच में क्लिक कर जाती है बैटिंग, किसी मैच में नहीं। तो बहुत अच्छे प्लेयर थे अकील फ़खर, लेकिन आज कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। ओवर हो गया है तो 2.5। लेकिन जब उनको मतलब बेनिफिट मिला फ्री हिट का, तो उसको उन्होंने फ़ायदा उठाया और 6 लगाया, लेकिन उसके बाद अपनी इनिंग को संभाल नहीं पाए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले बैट्समैन क्या करते हैं, क्योंकि इस टाइम उनकी 2 विकेट वो गवा चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 ओवर्स में 25 रन पर। तो नए आने वाले बैट्समैन हैं जो कि फेस करेंगे अली रजा अपने ओवर की लास्ट बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद फेस करेंगे उजैर, लास्ट बॉल जो कि लेफ्टी प्लेयर हैं। उजैर चकवाल लेफ्ट हैंड प्लेयर। अच्छी बॉल सीधा फील्डर के हाथ में और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 26 नेक्स्ट बॉलर 2 विकेट के नुकसान पर। आप बॉलिंग कर रहे हैं जी भाई। हसन खालिद मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप हसन देखें कि आज उस अंदाज में स्कोर तेज़ी के साथ नहीं हो पा रहा, बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ विकेट। आप क्या समझते हैं कितना अभी 3 ओवर में जैसे कि 26 स्कोर हुए हैं और 6 ओवर का मैच है, आप क्या समझते हैं कि कहाँ तक ये स्कोर कर पाएंगे? बैट्समैन बॉलर कंटिन्यू बॉलिंग पहली आई राइट थिंक यही बात लगती है कि ये बड़ा मैच है और बड़े मैच में बहुत प्रेशर होता है, तो इतने फायरवर्क्स क्यों नहीं हमें नजर आ रहे हैं? दूसरा रीज़न यही है कि पिच का बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले सीमेंट की विकेट थी, आज है ड्रफ की विकेट, और ड्रफ की विकेट काफ़ी स्लो प्ले कर रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड स्कोर होगा वो ये होगा कि 60 होंगे। बॉलर ये फुल टॉस करते हैं और ये बहुत बड़ा छक्का। ये हम चेक करेंगे कि अगर ये नो बॉल है, बैट्समैन इशारा कर रहे हैं पार की तरफ कि ये नो बॉल चेक करें, मगर ये बहुत बड़ा छक्का था लेफ्टी बैट्समैन की तरफ से। बहुत खूबसूरत शॉट, और ये अंपायर सिग्नल कर दे कि ये करेंगे। ये उजैर चकवाल की तरफ से बहुत लंबा छक्का, बहुत प्यारा शॉट। ये नो बॉल के लिए चेक कर रहे हैं अंपायर, ऊपर स्टेज भेज दिया है, अभी चेकिंग होएगी। इंग्लिश से उर्दू में ऐसे ही होता है। डिसीजन पेंडिंग।
उर्दू इंग्लिश में करें मिक्स करेंगे ना मिक्स You can talk in English, fine. उर्दू इंग्लिश दोनों नहीं आप इंग्लिश में करें बाकी उर्दू में करते हैं हाँ हाँ हाँ, fine. सही है थोड़ा सा माहौल बन जाएगा यहाँ होता है एक और नो बॉल। ये लगता है फेट चेंज होने वाली है एफएमटी टीम के लिए। बैट्समैन फ्रीड ये फ्री हिट है। नोबल से स्कोर कर So no ball के साथ the score has moved to 33. And there's another shot going high in the sky, but it's a free hit. Even if the catch is taken, still it's not out. Batsman has taken two runs. The score has moved to 35 for the loss of 2 wickets in 3.1 overs. Uzair Chakwal is trying his best to cross the expected score, so they can put pressure on the opposite team. Excellent ball. He's trying to york the ball, but ball swing away on the offside, from the outside, out of the outside, and it's a white ball. The score has moved to बना के रखे 2-3 बॉल 36 for the loss of 2 wickets 3.1 ओवर in 3.1 overs. Uzair Chakwal still eyeing at cow corner. Another shot on the square leg, a big six out of the ground. It's a very, very big, huge six. A monster hit. So Hassan Khalid, what do you think? This shot was, I think the air is blowing from our right hand side, left hand side. Probably air has also helped him cross the boundary. What do you think about it? That's another beautiful shot played towards long off, and that one. Just one more run. That is great fielding from the fielder. कमाल फील्डिंग भाई जबरदस्त Absolutely incredible stuff here. That last shot was a really good shot, pulled off his legs, off the hips, towards square leg for a maximum. An absolute beautiful shot by Uzair. 40-43 बॉलर बोलो नहीं Oh, that's a beautiful slow delivery by Abu Bakr. Hits the batsman on the pad, and that would be another dot ball. Interesting competition here. We have two left-handers batting at the crease right at the moment. Let's see if we can see any more fireworks. Oh, that's a beautiful delivery, driven towards cover, and that will be another single. And that's 2 runs, good running from the batsman. 3 runs, 3 runs. Oh, poor fielding, should have been better. But they've just given away a boundary. That's just 4 runs, that's poor fielding. 5 runs, are they playing or running 6 runs now? This is incredible stuff here. The batsmen have somehow managed to run 5 runs without hitting a boundary. 48. At the moment, FMT is at 48 runs in 3.5 overs with the loss of 2 wickets. Last ball of the over by Abu Bakr. बॉल The batsmen seem a little fatigued with all that running. I'll tell you what, this is a good cardio session for them. लास्ट बॉल बैट्समैन I'm not sure what the hold-up is for, but I think it's definitely because the batsmen are quite fatigued at this moment. The strike is with Uzair Chakwal. लास्ट बॉल Last ball. Another full toss, and that seems to be another wide. Well, I understand the intent here by the bowler. It's a good intent. He's trying to go wide and really full, bowling those wide Yorkers just to keep it outside of Uzair's reach. Because what we've seen so far is that he's really good off of his legs. 49. Oh, that is a beautiful delivery by Abu Bakr. नेक्स्ट बॉल Absolutely incredible stuff here. And that is the end of the 4th over. FMT is at 49 for the loss of 2 wickets. The last over will be bowled in
in a few moments. The current run rate is at 12.25, where the projected score seems to be 74 after the arrival of Uzair Chakwal. Uzair is standing at 16 runs of 6 balls, hitting 2 sixes with a strike rate of 266. This last over might determine the fate of this game. आजा बैट्समैन बैट्समैन स्कोर ज़्यादा है नॉर्मल है ज़्यादा है ये जो ट्रफ है ना ट्रफ की वजह से बॉल बैट पे नहीं आ रही है इट्स नॉट कमिंग ऑन द बैट The final over will be bowled by Ali Raza. हाँ हाँ देखिए कोई पड़ा वो देख नहीं रहे ना वहाँ जाके सर बॉल try बैट्समैन clock चाहिए। बॉल दे दे सर मैच स्टार्ट करेंगे रोक के क्यों He has bowled 1 over and given away 12 runs while taking a wicket. The strike is with Firdaus, who is batting with 8 runs of 8 balls. इन्हीं के बारे में कह रहा था आपसे मैं सॉरी इस तरह से ये माइक है Oh, another wide delivery. That is well wide off the wide crease. यार पानी का तो देखो यार अच्छा 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 आगे बेटे हाँ अकाउंट्स के अंदर बात हो रही है हाँ हाँ आपने कहा था ना 120 जी 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 There seems to be an issue with humidity. Oh, that is well bowled, very well bowled. That's gone towards square leg, squeezed through his legs, and that was 51 runs off for the loss of 2 wickets, where we have seen 4.1 overs being bowled. That's well bowled by Ali Raza. That's a good start up after that wide delivery. Here comes the danger man, Uzair Chakwal. 16 of 6. What is he thinking? That's well bowled. That is really well bowled, and that is hit the stump. That's a beautiful delivery. Very good comeback. This might be the end of a very prosperous innings by Uzair Chakwal, where he scored 16 runs of 6 balls, hitting 2 sixes. A very entertaining innings. Well played. Ali Raza is spinning up a web here, where he has taken 2 wickets while only giving away 14 runs. 71 का है FMT stands at 51 runs with the loss of 3 wickets. बैट्समैन नेम 4 balls left in this over by Ali Raza. Let's see if he can pick up a couple more wickets. The next batsman that walks in is Shiraz. अभी यही क्वेश्चन करते हैं कौन सा हाँ पूछो बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द स्टंप्स 4 balls to go Shiraz seems serious about scoring some big runs here today, but does he know that the pitch is quite slow today? Ali Raza in his run up. Oh, that is well bowled. Hits Shiraz on his pad. That is a very good delivery, in swinging delivery with good pace. I think Shiraz might have to rethink his strategy for this pitch, because it is definitely a different one from last night. Ali Raza is bowling an amazing spell here. He might be the game-changing player of this team.
Ali Raza bowling his fourth delivery now. Oh, that is a beautiful delivery. Oh, but it turns out to be a wide. I reckon his idea is right here, bowling it wide, not to give a lot of, not to bowl it into the arc of the right-handed batsman Shiraz. Keeping it away. That is a good delivery, but nonetheless, it is still a wide. But he'll have to re-bowl that one. Raza in his run-up, getting ready now. Oh, let's go straight up! Full toss, bowler underneath it. Will he take this? Oh, he's dropped it! That was a tough catch. Couldn't say much about that. That ball was swirling in the air. A full toss, top edge straight up in the air and dropped by the bowler. Shiraz has a life. FMT at 54 for the loss of 3 wickets, 4.4 overs. 2 balls left in this over. Ali Raza could have had 3 wickets, but he seemed to have dropped his own catch. This is good bowling by Ali Raza, keeping it nice and full in the outside the arc of the batsman. Oh, that is wide. That is quite wide. But I don't think that is much of a problem here. I'd rather bowl wide and then give a dot ball on the next ball than go for a 6 in this type of cricket. Tape ball cricket is quite unpredictable. There seems to be a problem with the ball. Seems to get wet every time it goes onto the ground. Oh, that is huge! That has gone for a big 6 over mid-wicket. He has pulled that to the moon. What a beautiful shot by Shiraz. That ball set up absolutely nicely for the batsman, and he's pulled that away for a 6. Huge shot by Shiraz. That seems to have given him a lot of confidence. And FMT is at 61 runs for the loss of 3 wickets. 1 more ball left in this over. This will conclude the 5th over, and Ali Raza's spell has been ruined. If only he took that catch, this wouldn't have happened. Yes, you know, अच्छा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि you don't have. I reckon that shot, that 6 was about 80 meters full करते हैं ना beyond the boundary. That was a beautiful shot. He pulled that extremely hard. बहुत एक्सप्रेस पेस हो तब पीछे रखें आप. Last ball of the over, Ali Raza. क्या पार दिया उसने वो भी Oh, full toss, and he's flicked that way. Will this be 2 runs? That will be a double. Well bowled. Well bowled. Hassan, what do you think? We can see that whoever is bowling a bit short, he's getting hit 6. So far, we have seen a couple of 6s on the short balls. Probably when some of the bowlers are bowling short, so it's giving enough time to batsman so he can hit out of the ground. But whoever is bowling full, probably he's saving himself from big runs. So I feel that the key is for the bowling side to be full and to be on the spot. Probably the Yorker length. It could have been full toss because we can see that many of the full toss have been bowled, but none of them was thrown out of the ground. But whatever was short balls are thrown off the ground. No, definitely. I think key here for bowlers is to just bowl absolutely full. You don't mind going too full on this pitch. Bowling a full toss is way better than bowling too short because the pitch is really slow. The last bowler bowling this over is Fazal Khan. He hasn't bowled any overs in this game, but this is his first over, and he is bowling the final over, which is the most crucial over of this game. First ball. Oh, that has been sliced towards third man, and the keeper will collect this, and this will be just a single. That is well bowled. Good start up by Fazal Khan. But yeah, definitely, this is quite different to how you would expect a hardball game to play out. Whenever you're playing with a hardball, and if it's a T20 game, you would expect bowlers to vary it up, bowl off short balls, not go too full. Actually, it's actually known as a crime to go too full in a hardball game. In a T20 game,
because that sits up very nicely for the batsman. He can easily smack that for 6. Second ball of the over. And he has missed that. The keeper has missed it as well. I think he got a little edge on that. And that has bounced just short of the keeper. 2 runs taken there. And that is a run out. That is quite unexpected. I think the batsman was quite tired there. He couldn't get into the crease in time. Interesting there. I think this was Shiraz that just lost his wicket. Got run out. He batted well, hit one great 6. And good fielding, good bit of fielding, yeah. Oh, my mistake. It's Firdaus who's lost his wicket. Shiraz is still there on the crease. There's 4 more balls left in this over. Zahid Ali is the next batsman that walks in. And FMT is standing at 65 runs with the loss of 4 wickets. 5.2 overs. And that's been pulled away. Another 6. That's a poor delivery. Why would you go short? That is a poor delivery. That ball sat up very nicely for the batsman, and he's pulled that into the stands. That was a beautiful shot. I'll tell you what, ball full, you might have a better chance of not being hit for 6, because bowling too short is just absolute pies. Oh, he's missed that. That's a better delivery. That's all you had to do. And this might be another run, and it's a run out. Beautiful bowling, good comeback. That is absolutely amazing. This is what you're supposed to do when you're under pressure. Get hit for a 6, bowl a really good delivery, and then make things happen. That's the beauty of the sport. That's some good bowling and good fielding. Shiraz lost his wicket. A good knock of 17 runs of 6 balls, scoring hitting 2 sixes with a strike rate of 283. I reckon he's hit probably the biggest 6s of this match. FMT is at 71 runs for the loss of 4 wickets, where 3 overs are still left of this over. That's a 5 wickets. 5, 4. 3 balls bowled in this over. 3 balls still left. 5 wickets. And FMT has lost 5 wickets, but I think that's quite irrelevant here because there's only 2 balls left. There's only 2 balls left of this over, and Rukhsar Malik is the next batsman to walk in. Last 2 balls. Oh, that has been played up in the air. Will this be taken? And that's gone over the fielder, and that's a boundary. That is a good shot. That is well played. But as a bowler, I wouldn't mind that. I wouldn't mind bowling a good ball being hit for a 6 than rather bowling a bad ball than being hit for a 6. Well bowled. And a very good shot by Zahid Ali up front for his first ball. Last ball of the over. FMT is standing at 75 runs for the loss of 5 wickets with 1 ball to spare. Zahid Ali, he must be aiming to hit a big 6 here. Fazal Khan has bowled 5 balls, given away 12 runs. What will he do for his last delivery? Last ball of the over. Zahid Ali on strike, bowler Fazal Khan. What will be the outcome? Oh, that is well bowled. That is really well bowled. And that's good fielding. And he's run that batsman out. That is a good finish for the bowling side. Good finish. Well bowled. Good fielding. A very good comeback after a couple of those really good 6s. But I reckon this is a very chaseable score. 75 runs. And the target should be 76. So our AR projected a score of 77 runs. So it was off by 2 runs. And the batting side has managed to score 75 runs. Thank you, Hassan, for updating us about match status. स्कोर जो है वो हो गया जी 75
और जीतने के लिए NXCC को चाहिए 76 करने के लिए बहुत अच्छी बैटिंग करना होगी, कंसिडरिंग द पिच इज स्लो, और FMTK को ख़राब बॉलिंग करना होगी, शॉर्ट बॉल करना होगी, तब जाके ये होगा, क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया है कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द विकेट। वसीम, आप क्या समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है जो NXCC है, उनके पास कौन से अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो 76 का जो ये स्कोर है उसको क्रॉस कर लेंगे? जी वहीद भाई, बिल्कुल 76 75 रन अच्छा टोटल है विकेट पर, और बॉलिंग साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग है FMTK की, और लेकिन बैटिंग लाइन भी उनके पास बैट्समैन बड़े अच्छे हैं जिन्होंने मतलब पिछले अपने लास्ट 3 मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी बैटिंग की वजह से उन्होंने YouTube से YouTube, yes, I think, yeah. और उसके बाद उनके बैट्समैन क्लिक करते हैं या नहीं, उन्होंने विकेट को समझ लिया अभी तक आई थिंक तो, और देखते हैं उस विकेट को समझकर वो परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। उनके पास जुनेद बैट्समैन है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले लास्ट 3 मैच से, और 1 साइडेड मैचेस विन करवाए हैं अपनी टीम को, तो आज उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करेगी NXCC। जी भाई, आजा बैट्समैन बिलाल, अभी आप कल देख चुके हैं मैच NXCC का, आप क्या समझते हैं कि उनके कौन से ऐसे बैट्समैन होंगे जो मेन प्लेयर, जैसे ये कह रहे हैं जुनेद जो है मुझसे सब परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जुनेद पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुनेद के अलावा और कौन से? मेरा ख्याल है ये 6 ओवर का मैच है, इसमें बस 1 या 2 बैट्समैन ही चाहिए होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी बिलाल। जैसा कि आपने पूछा है कि NXCC जो कैसी बैटिंग करेगी आगे, मैं आपको बताता चलूँ कि वो सीमट पिच थी और ये टर्फ है, बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे बैट्समैन का सही पता चलता है, यहाँ पे पता चलेगा कि वो कैसी बैटिंग करेंगे, क्योंकि सीमट पे पूरा बाउंस होता है, और यहाँ पे पता चलेगा कि वो किस अंदाज में खेलते हैं। आपने फर्स्ट इनिंग देखी है, और जो अच्छे कल बैट्समैन थे तगड़ा उन्होंने खेला, आज उनको समझ नहीं आई है, और जो इनके मेन बैट्समैन थे अखीर 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच उनको मिला, आज उनको कुछ भी नहीं समझ नहीं आई उनको। वो जो राइट आर्म बैट्समैन थे लेफ्ट होके मार रहे थे, लगा रहे 6, तो अभी ANK की टीम को देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। ये तो अब उनको पिच पे जाके पता चलेगा, क्रीज पे जाके पता चलेगा कि वो अपनी टीम को विन करवा सकते हैं बैट्समैन या नहीं। जी खालिद। बिलाल, मेरा ख्याल में यहाँ पर बैट्समैन के लिए जो की है वो ये है कि वो अगर थोड़ा सा वेट करें, यानी जिस तरह सीमेंट के ऊपर तो ऐसा होता है कि जैसे बॉल पिच पर लगती है उसी पेस के साथ ऑलमोस्ट वो बैट्समैन के पास पहुँचती है, तो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं उससे मैच कर जाते हैं, और आप अगर बैट घुमाएंगे तो चांसेस है कि आप 6 मार देंगे। लेकिन ट्रफ के ऊपर बॉल जब पड़ती है तो उसके बाद थोड़ी सी उसकी पेस कम हो जाती है, स्लो पिच होती है, तो अगर बैट्समैन थोड़ा सा टाइम लेकर थोड़ा सा वेट करके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बैट को अगर तेज से घुमाएं तो उससे जो है वो आखिर में देखा है कि जो आखिर के जो शॉट 2 छक्के लगे हैं वो बहुत फुल नहीं थी, ना ही वो हाफ बॉली थी, लेकिन आगे थी बॉल, वो शॉर्ट बॉल नहीं थी, आगे थी, और उन्होंने थोड़ा वेट करके अपना बैट घुमाया और दोनों छक्के लगाए हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसको सीमेंट की तरह समझ के जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं उसी अंदाज में ही अगर आप बैट घुमाएंगे तो शायद हो सकता है कि आप बॉल को मिस करें, जो कि हमने शुरू के रोजों में देखा है। और बॉलर के लिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो जितना भी फुल रखें, यॉर्कर लेंथ का रखें, उसमें भले वो फुल टॉस हो जाए, यॉर्कर लेंथ के अंदर रखें, बॉल रखें, तो इम्कान इस बात का है कि उनको छक्का नहीं लगेगा, चौका तो उस सूरत में ही लगेगा अगर वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं होगा, अगर आपने फील्डिंग उस अंदाज में ली हुई होगी तो इम्कान इस बात का है कि 4 बाउंड्री में लगेगी। तो बहुत अच्छा चांस है NXCC के पास भी और FMTK के पास भी, दोनों बहुत ही क्वालिटी साइड्स हैं, और हमें एक बहुत ही क्लोज मैच जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो वसीम साहब, आप क्या समझते हैं
कि मैच जो है ये कितने ओवर के अंदर सीसी जो है ये टारगेट जो है वो पूरा कर लेगी? तो चेजिंग की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता कितने ओवर तक कर सकेगी, लेकिन ये है कि टफ टाइम देगी बॉलिंग साइड को भी, जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइन है। और जिस तरह आपने बिल्कुल बताया कि अगर बॉल को टाइम देकर अगर ये खेलें तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रुक कर आ रहे साइड में हैं। आप 6 फील्डर नहीं ले सकते। तो अगर यॉर्कर लेंथ पे बॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक टफ टाइम बैट्समैन को मिलेगा बॉलिंग साइड की तरफ से। तो मैच शुरू होने के बाद ही देखा जा सकता है कि क्या सिचुएशन चलेगी और चेजेबल को चेज़ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन स्कोर चेजेबल है 6 ओवर में 76 रन। तो बैटिंग बैट्समैन साइड बॉलिंग राइट आर्म ओवर द स्टंप। इशारा अनुसार है। और उनके ओपनर्स हैं रुखसार Batsman मलिक, ready? जो कि इन्होंने पिछले मैच में भी थोड़ा अच्छा खेला है। बैट्समैन रेडी, प्ले। जुनेद और हसीब दो ओपनर्स बैट्समैन हैं, जुनेद और हसीब। जैसा कि पहले ही बताया कि जुनेद इनका रेगुलर अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उन्होंने जुनेद से ही ओपनिंग इनिंग की जो है इनिंग को स्टार्ट करना बेहतर समझा। और बॉलिंग साइड की तरफ से जो पहला ओवर करने आए हैं वो तैमूर हैं। तैमूर FMTK की तरफ से बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और अपनी बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद हैं और फेस करेंगे जुनेद। अच्छी बॉल सीधी फील्डर के हाथ में जाएगी और 1 रन का इजाफा हो पाएगा इस बॉल पर। इस 1 रन के साथ पहले ओवर की पहली बॉल पर सिंगल और 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। इम्पोर्टेंट विकेट है इनके पास जुनेद और हसीब की, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। थोड़ा टाइम देकर खेलेंगे तो होपफुली बेहतर हो सकेगा इनके लिए। तैमूर अब फील्डिंग को चेंज करते हुए, कभी राइट हैंड बैट्समैन आए हैं हसीब। तैमूर अपनी बॉलिंग स्टार्ट पर फेस करेंगे हसीब। अच्छी बॉल तैमूर की तरफ से, बिल्कुल बॉल को ना समझ सके हसीब और बीट हुए। पहले ओवर की 2 बॉलों के इख्तिताम पर स्कोर 1 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तैमूर की पहले 2 बहुत अच्छी डिलीवरी तीसरी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार्ट पर। अच्छी बॉल सीधी फील्डर के हाथ में और 1 रन का इजाफा हो पाएगा इस बॉल पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2। पहले ओवर की 3 बॉलों के इख्तिताम पर स्कोर 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे जुनेद और अपने ओवर की चौथी बॉल करने के लिए तैमूर अपने बॉलिंग स्टार्ट पर। जुनेद पे उम्मीदें रखी हुई हैं अनीक सीसी ने। अच्छी बॉल और ये कैच हो सकता है, लेकिन फील्डर के बॉल से दूर और 1 रन का इजाफा इस बॉल पर। इस 1 रन के साथ स्कोर 3। बैट्समैन के बीच में जाना है, अवॉइड। जुनेद को थोड़ा टाइम लेकर खेलना होगा और जुनेद इम्पोर्टेंट विकेट है अनीक सीसी के लिए। और FMTK को भी जुनेद पर नज़र है उनकी, जुनेद की विकेट पर। पहले ओवर की 5वीं बॉल करने के लिए तैमूर अपनी बॉलिंग स्टार्ट पर फेस करेंगे हसीब। अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल और अच्छी डिलीवरी कराई तैमूर ने। बीट हुए हसीब, बिल्कुल बॉल को ना समझ सके। बहुत उम्दा ओवर तैमूर की तरफ से। पहले ओवर की 5 बॉलों के इख्तिताम पर स्कोर 3। बहुत उम्दा ओवर तैमूर की तरफ से। लास्ट बॉल करने के लिए तैमूर अपने बॉलिंग स्टार्ट पर। बहुत उम्दा बॉलिंग। अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ फैसला कर दिया नो बॉल चेक करने के लिए। हाथ से स्लिप होगी बोल
आई थिंक इसका बॉल स्लिप हुई है मेरे ख्याल में, हाथ से बॉल से स्लिप हुई है। अंपायर का फैसला देखना होगा इस बॉल पे। पहली 5 डिलीवरी बहुत अच्छी तैमूर ने की, आखिरी डिलीवरी उन्होंने फुल टॉस दे दी। डिसीजन देखना होगा था अंपायर का। ताडूमर का फैसला नो बॉल, और इसी नो बॉल के साथ फ्री हिट है इस बॉल पर। फ्री हिट का फुल फायदा उठाते हुए 6 रन के लिए खेल दिया हसीब ने। बहुत उम्दा शॉट हसीब की तरफ से, बहुत अच्छा ओवर करते हुए आखिरी बॉल पे जरा सी गलती की और उसका खूब फायदा उठाया हसीब ने, और फ्री हिट का फुल इजाफा फायदा उठाते हुए 6 रन के लिए खेल दिया हसीब ने। इसका देखना मॉडम का क्या है पासवर्ड, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। इनसे लड़े आप। स्कोर कितना हुआ? कौन सा 16 ऐसे 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 16 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 5354 जी भाई 377 हो गया। What a wonderful batting display by Haseeb. A rapper shot, excellent shot. सर जी थोड़ा जल्दी करेंगे। The ball was pretty quick. I was calling Temur yesterday a ball with 150 speed. I'm sure next time we'll be ranging the speedometer also, so we can really check the speed of bowlers. But this was really quick and equal reply by batsman Haseeb. It was a huge six. So Hassan, what do you think about the batting by Haseeb? I think he's taking full advantage of that short ball. Even though the bowler was bowling quite a fiery spell there, he did take advantage of that short ball and hit that for a big 6 over square leg. Interesting enough, Temur is quite a experienced campaigner in this format. He has played the Abu Dhabi T10, played for Delhi Bulls, and he took 4 for his in his first debut game. So he is not alienated from this format. He knows what to do when things get rough. He knows what to bowl when the batsmen are charging at him. And with that pace, he's got a lot of options. Now comes Uzair Chakwal to bowl the second over of the innings. Anek is at 16 for none for the first over. First ball. Oh, that is a wide delivery, full and wide. That will be, you'll have to re-bowl that one again. Junaid is on strike with 2 runs facing 2 balls. Haseeb, on the other hand, has scored 2 sixes in that first over. Uzair Chakwal bowling his first ball again. excellent batting, बहुत अच्छी। Oh, he's pulled a shot, he's pulled that away, and that's another 6. This is not good bowling. Should be bowling full, and he's pulled that ball set up very nicely for the batsman, and he's put everything into it. That is a very good shot by Junaid. NEC requires only 53 runs of 29 balls. I think this game will end quite quickly if they don't change up their plans, the bowling side. If they don't change up their lengths, this game will end in 3 overs. A very good shot by Junaid. Pulled away, gone for a huge 6. Uzair Chakwal getting ready to bowl his second ball of the over. Oh, that is well bowled. Leading edge towards extra cover, lands in no man's land, and that will be a couple of runs. Will this be a run out? No. Just a couple of runs. Good running from the batsman. Very good running. Now that's a better length to be bowling on this pitch. You can't afford to go too short. You have to be full on every single delivery.
The ball that's bowled really short just sits up very nicely for the batsman. The batsman's got ample amount of time to dispatch that away for a beautiful 6. Junaid on strike. A very good comeback by Uzair Chakwal. Third ball of the over. Well, that is well bowled, full outside off, swinging away. A very good delivery by Uzair Chakwal. I'll tell you what, he's got a very similar run up to Haris Rauf. He jogs in like Haris Rauf, finishes up like Shaheen Shah. He's a combination of both. A very good delivery. 3 balls, 9 runs given in this over by Uzair Chakwal. Junaid 10 of 5 and EQ 25 for the loss of none. Oh, that is well bowled, keeping it nice and full, keeping it outside off, making the batsman reach. A very good delivery, very good comeback by Uzair Chakwal. Now this is what you get with experience. Uzair Chakwal has played a lot of tournaments. He knows what to do in these type of situations. A very good delivery by Uzair Chakwal. A very good comeback. 2 balls left in the over. Oh, that is well bowled. Very good delivery. Very consistent. Good lines and lengths. Just landing it in the area. Very good bowling by Uzair Chakwal. He can bat, he can bowl. What can he not do? Amazing bowling. Batsman under a little bit of pressure. Junaid 10 of 7 balls, hitting 1-6. What will he do on the last delivery? A very good over. Well, could be a very good over if he concludes really well. We'll only find out after this final delivery of the second over. Oh, that is wide. That is wide. I wouldn't mind that though. Bowling good lengths, keeping it away from the batsman's reach. 1 wide delivery, wouldn't mind that at all. You'll have to re-bowl that one. Batsman had a little chat in the middle there. I'm pretty sure they're discussing the length, the change in lengths that Uzair Chakwal has provided after being pulled for that big 6. Last ball of the second over. ANEQ stands at 26 for the loss of none. Oh, that is well bowled. Well bowled, but another wide. Good lengths. Good work on the line. But nonetheless, that is good length. The batsman just waiting for that ball to come back in so he can dispatch it out of the ground. I think he's trying to avoid his strong zone. So keeping that in mind, he's bowling. The bowler's got the right plan here, keeping it nice and full and wide, keeping it outside the reach of Junaid, who seems to have a very good leg side. He's a very good puller of the ball. Final delivery of the second over. Oh, well bowled. That is a very good delivery, keeping it full. A little bit of extra pace on that ball. I think that was the effort ball by Uzair Chakwal, and a very good finish at the end of the second over. ANEQ is at 27 runs for the loss of none in 2 overs, where they require 49 runs in 4 overs. Haseeb on 13 of 5 and Junaid on 10 of 8. Now what's interesting to see here is that as soon as Uzair got hit for a 6, where he bowled really short, he instantly changed his plan and went really full, just very
full, keeping it in the block hole, keeping it nice and wide. And the last ball was in the stump. A lot of discussions going on in the middle there. A lot of planning. They are very serious about this game. A semi-final. The pressure is on. High stakes, high pressure, and high reward. Right now over the stumps. Taimur back for his second over. Taimur's got some serious pace, but what he does with that pace is what really matters here. शायद वो साल की जो मैच एम्बैरेसमेंट हो लेकिन आज तक जान लगा है मैं तो Taimur bowling his second over. Gave away 16 runs in his first over. Oh, that is well ball. It's gone straight up in the air. Can this be a six? And that's a huge six. A top edge played down the middle, and that's gone for a big six. Slightly too short of that. Slightly too short. Could have been fuller. And Haseem has dispatched that one for another six. Oh, that has gone down leg. Taimur under liberal pressure now. Be hit for six, first boundary, bowls a wide, second ball. Under a bit of pressure now. Needs to bowl in that block hole. Keep it full, keep it in the stumps, keep it outside the reach. Don't let the batsman get underneath that ball. Keep it nice and full. Third ball. Oh, that is well bowled. Bowled a full toss, but that's a good delivery in this type of cricket. That will be just one. A very good delivery. Good comeback by Taimur. Using full advantage of his high pace. Bowling some serious gas here. Taimur 1.2 overs, 24 runs. He can still make a comeback, bowl some 4 really good deliveries, and get this over done with. The left-handed Junaid comes back on strike. You don't want to be bowling in his arc. He's got the capacity and the capability to pull it into the stands. Some serious bat speed there. Oh, he's bowled that short, and the batsman has missed out there. Oh, that was a freebie, and he's missed out there. The batsman arguing with the umpires, claiming that that's a wide. But the final decision is always with the umpire. You cannot argue with the umpire. That is final. If the umpire says that's a wide, it's a wide. If it's not a wide. You cannot argue with that. That is quite lucky for Taimur that the batsman has missed out. That ball was short on the legs, over the stumps. Could have easily dispatched that behind the floodlights. Oh, bowled it full, driven away towards long off. That is well bowled by Taimur, using all of his pace, hitting the right lengths, and he is bowling absolutely amazing. 3 balls left in this over. ANEQ is at 36 runs for the loss of none. ANEQ requires 40 runs of 20 balls. 40 of 20. 40. 21 पे? It's 40 now? Oh, he's bowled that 4 and he's played that straight to the fielder. Will this be taken? And that's a great catch off the boundary. Well bowled, Taimur. Good fielding. FMT is back in the game. A couple of good overs. This is great cricket, and Haseem has been parcelled. 20 runs of 7 balls, hitting 3 sixes. He was looking in fine touch, but now he must take the long walk back to the pavilion. Batsman! He has played an absolutely amazing knock. He's played well. Good bowling by Taimur, very good comeback. The next batsman walking in brings a ball with him. think of a question first. Expert opinion. This has been quite interesting. Good comeback by FMT. They seem to be going. They were at the start. They were going for quite a lot of runs because they didn't pick up on the right lengths to bowl on.
But before we get into that, Furqan is the new batsman that walks in, and he has taken up the role of the one-down batsman, which is in any form of cricket, it is the most crucial position for any batsman. So Furqan has quite a bit of responsibility on his shoulders, but he seems to be the type of person who is quite used to that kind of responsibility. Let's see if he can use his experience in this game and bring it home for their home side. Swinging that bat really hard, and he is warming up. Batsman bowling right arm over the stumps. I can Last tell ball. by that swing that he's got some serious bat speed. He is not a force to be messed with. Taimur bowling his last ball off his second over. Can he finish up with some good figures? Last ball of the over, Taimur getting ready to bowl his final delivery. Furqan playing his first delivery. Oh, that's well bowled. Bowled it full on his legs. A very good delivery by Taimur. A great finish. That is some really good bowling. He understood the assignment very quickly there. A good finish by Taimur. Bowled 2 overs, 26 runs for 1 wicket with the economy of 13 runs. ANEQ is 37 runs for the loss of 1 wicket with 3 overs. They required 39 runs in 18 balls. Another discussion in the middle there by the FMT team. They're all discussing to decide on who should bowl the next over. The umpire is ushering the team to hurry up because they are spending a little too much time discussing and not playing. Get on with the game, boys. जी थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग अभी क्या हो कौन है बॉल Should be the question. It's got to be different. It can't be always on the pitch. What do you think about the bowling difference between these two sides with the pace and with their actions, Mr. Abdurrahman? I think Anik Sisi has done really well in terms of bowling, as their length was perfect. Batsman Yes, bowler they change, started bowling off right arm over the slow, stumps. but now they've clutched up pretty well. And I guess FMT as well have started off slow. They got hit for runs, but then have clutched up as well. Got the huge wicket of It's fine. It's fine. Can't remember. And so basically I think what FMT needs to do is keep on bowling full onto the pads, not ball short, because as the wicket is slow, batsman gets a lot of time to swing that. Beautiful delivery, and it's a wide, pressure is getting to the bowler, and these last overs are really crucial for both teams. Both teams need to clutch up. What do you think, Mr. Hassan? Yeah, a good startup, but good lengths. Could be better with the line. Hassan Ali is the new bowler that's bowling for the FMT team. He is bowling the very crucial 4th over of this game. Starts off with a wide. Got to re-bowl that one. Oh, he's bowled that short, and that's gone over the keeper, and he's missed it. The keeper has misjudged that catch, and he's dropped it. Could this be the game-changing catch? That was a good delivery, since it was short and wide, so not really in the arc for pulling there. So a good delivery to start up there. Hassan Ali, one ball, 2 runs. The batting side requires 37 runs of 17 balls. Junaid on strike.
Oh, that is well bowled. Bowled it really full. That is a very good delivery. And that might have hit the stumps there. That is a very good delivery. Bowled the batsman. Junaid has to take the long walk back because he has missed one. That was a very good delivery by Hassan Ali. Well bowled. I think this game is slowly shifting into the hands of FMT, and A and EQ are struggling now. This is good bowling by Hassan Ali, keeping it nice and full, not giving the batsman a lot of room, keeping it nice and into the block hole. The batting side should not lose any hope because they still have 16 balls to work with, and with how this game works, they can easily score that amount of runs in 2 overs. So they have 37 runs required from 16 balls, where their current run rate is 11.7. 4 balls to go. They stand at 39 runs with a loss of 2 wickets. Hassan Ali bowling his 3rd delivery. He's bowling well. Tokir is the new batsman that walks in. He will be taking strike. Oh, a slower delivery. What a beautiful change up. This bowling side, FMT has a bowling side with a lot of skill. Their team is quite skillful. Their bowling side is quite skillful. They're using those slow deliveries to the right lengths. They're bowling to the right lengths. They're bowling on the right areas, and they're using all of their skills. This is good bowling by Hassan Ali. Oh, another slower delivery. Very well bowled by Hassan Ali. A very good delivery by him. He's changing it up very well, mixing it up. He's got all the tools in the toolbox. A very good delivery. He knows what he's doing. He knows how to get the batsman out. A very good delivery. 4 balls bowled, 2 left in the over. A couple of boundaries would make this game a little more interesting. Back the ball in. Oh, that is well bowled. That's gone straight up towards point, but no man there. Keeper runs after it. A very good throw, flat, and that's hit the stump. Is that another wicket? I think we'll have to check that on the screen. We've got a camera for a reason. Very risky batting there, very risky running. It's a really good piece of fielding. That keeper was quickly onto it. He was onto it like a lightning bolt. Very good fielding, quick fielders there. ANEQ is under a little bit of pressure now. 35 runs required in 13 balls. Hassan Ali has bowled one hell of a spell here. 5 balls, 4 runs, 1 wicket with an economy of 4.8. This is good economy for a 50 overs game. Oh, that has been played towards cover. Will this be taken? And he's played that in the gap for a boundary. What a beautiful shot. That is well played by Tokir. He has used full advantage of that delivery. A very good shot, but lacing that through covers into the gap. A beautiful shot. So well bowled Hassan Ali. 9 runs given in his first over while taking a wicket. ANEQ stands at 41 runs with a loss of 2 wickets at 4 overs. They require 31 runs in 12 balls. So 2 overs, 31 runs. Mr. Hassan Khalid, I have a question for you. In your professional opinion, what do you think ANEQ-CC should do in this situation where they require 31 runs in 12 balls? It's a very tough situation. The bowling side is bowling very good, beautiful length, and they're fielding well as well. And so, what do you think ANEQ-CC should do in this situation, in your professional opinion? I think ANEQ, what Tokir and Furqan should do at this moment, because they've only got 2 overs left to play, and they've got about 31 runs to chase.
They should stay deep inside of their crease, wait for their short balls, and dispatch them for sixes. Full deliveries, play them away for into the gap so they can run for 3 runs. Anything short, put that away. Do not give any chance to the bowler whenever they bowl short, because bowling short on this wicket is a freebie. Uzair Chakwal comes back for a second over. He bowled a very good first over after being hit for a 6 in that first ball. So this will be a good matchup with Tawqir and Uzair Chakwal. खुद का लाइव चल रहा है किस फेसबुक पे जी किस नाम से नाम क्या ये थ्रेड पे नाम से Uzair Chakwal checking his field. Then he wants his long off to be quite straight. That long off is quite straight, really straight, right next to the side screen there. Oh, that's well bowled it nice and full, away from the batsman's swing, and that is good bowling. What I really like about Uzair Chakwal's bowling here is that he's not trying to go for extra pace there. He's just trying to keep it on that length, keep his lines nice and consistent. He doesn't want to go wayward while trying to give extra pace there. So this is good bowling by Uzair Chakwal. Oh, well, Uzair Chakwal has gone high in the air. That's gone to the moon. Will this be taken? And the fielder could not get underneath it. Oh, he had ample amount of time there. Love, I think the ball was swirling in the air. That ball kept on going away from the fielder, so a full spin couldn't have gone him anywhere near that ball. That ball was swinging away. A difficult chance dropped. 10 to 29. 29 of 10 ANEQ requires 29 of 10 deliveries. 29 of 10. Uzair Chakwal bowled another full delivery. That is good bowling, especially on this surface. मैं वापस आऊँगा तो लेट हो जाऊँगा तो दरवाज़ा खुला होगा ना Oh, he's bowled a no ball. He's bowled a full toss, and that's been pulled away for 1 run, but that will be a run out. The running could have been better, but that is a full toss and potentially a no ball. Could be a no ball, but we do not know at this point in time. The umpire will confirm and let us know. So we're not sure if that's a no ball, but that is still a wicket nonetheless. And I think it is Furqan that has to take the long walk back. Good bowling by Uzair Chakwal. Apart from that full toss, he has bowled a couple of really good deliveries. चेक कर रहा है Oh, that's a no ball. It's been confirmed. That ball was quite way up high, above the waistline. It was quite high. So that is a no ball, and that's a free hit. The batsman will have full license to do whatever they want with that delivery. Next batsman. फुरकान ये तैमूर है बैट्समैन फ्रीड साथ के लड़के जानता हूँ Oh, that is well bowled by Uzair Chakwal, bowling it nice and full. Good change-up for that no ball. He's bowled well. He's bowled really well here. बैट्समैन का नेम क्या है ANEQ requires 26 of 9 deliveries now. Usman Malik is the new batsman that walks in and who faced up against that free hit delivery, only managing to edge it towards the third man. ऑल बॉलर Uzair Chakwal's got 3 more deliveries left in this over. 4.3 done. 26 of 9 ANEQ is standing at 50 runs for the loss of 3 wickets in 4.3 overs. Batsman on strike is Usman Malik.
Oh, he's played that well into the gap, but it will only be a couple of runs here. Oh, that's well done, well bowled. Good bit of running. It's only 2 runs though. 2 runs will not. Uzair Chakwal will not mind those 2 runs. Two more balls left in this over. थैंक यू हसन, बहुत ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है, बैटिंग और बॉलिंग, ज़बरदस्त डिस्प्ले ऑफ बैटिंग एट द सेम टाइम, एक्सेलेंट डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग। उज़ैर चकवाल बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग करते हुए और बैट्समैन दे आर ऑल थ्रोइंग ऑल अराउंड। अगली बॉल उस्मान मलिक को, और बहुत ही अच्छी बॉल स्विंग करती हुई थोड़ी सी बाहर निकली और बल्ले को मिस करती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में। इट्स अ डॉट बॉल एंड एज आई हैव बीन टेलिंग, डॉट बॉल इज अ प्रेशियस बॉल इन दिस फॉर्मेट। इट हैज़ द इक्वल वैल्यू एज अ बैट्समैन हिटिंग अ 6। बहुत ही ज़बरदस्त। उस्मान मलिक एकदम फिट तैयार अपनी अगली बॉल के लिए, अगली बॉल खेलने के लिए। उज़ैर चकवाल की आखिरी बॉल है और बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन हवा लगता है इसको बाउंड्री के अंदर ही रुक देगी और बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा है। हवा की वजह से बॉल थोड़ी सी फील्डर से दूर जा रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा जज किया है। समबडी हु इज एक्सपर्ट फील्डर कैन ओनली कैच। और अब मैच थोड़ा सा FMTK की तरफ शिफ्ट किया है बैलेंस, but let's see, this is cricket. NXCC needs 6 of 24 or 6 balls. बस ये मैच जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैच हैज़ कम टू द स्टेज फाइनल ओवर, और इस फाइनल ओवर के अंदर 24 इस तरह के फॉर्मेट में 24 से क्या 30 भी आराम से बन जाते हैं। बैट्समैन की बस उसको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और वो सिर्फ 4 छक्कों की बात है। 2 बॉलें इसके बाद फिर भी स्पेयर हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होने जा रहा है इस तस्वीर में? भाई देखा जाए तो अनेक क्रिकेट क्लब ने पिछले मैचेस में भी आखिरी ओवर में काफ़ी भी चेस किया हुआ है, तो कुछ भी जो है वो हो सकता है यहाँ पे। बैट्समैन बॉल में 1 ओवर में 4 छक्के लगाना या 5 छक्के लगाना मुश्किल नहीं है। और हेलो बैट्समैन, क्योंकि पीछे रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है, इस हवाले से आखिरी ओवर में ये चेंज किए हैं इन्होंने। तो अभी देखना होगा कि अभी जो उनके बैट्समैन हैं फुरकान और अबूबकर वो कैसा परफॉर्म करते हैं आखिरी ओवर में। लेकिन पहली 2 बॉलें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैच ला यार बैट्समैन बॉलर चेंज, बॉलिंग राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कीपर चेंज। अबूबकर फेस करेंगे। 24 अरे उधर तो बैठे रहते हैं यार। सो इस फुरकान फेस करेंगे। जाहिद अली को वाइड बॉल, उम्र का इशारा देखना होगा। उम्र का इशारा वाइड बॉल। वाइड और बाय का FMTK को एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि आखिरी ओवर है। 6 बॉल पर 23 रन रिक्वायर्ड है। ने सारियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। सेम सिचुएशन बन चुकी है अनेक क्रिकेट क्लब के लिए कल वाले मैच की तरह। 6 बॉल पर 23 रन। बॉलर हैं जाहिद अली, फेस कर रहे हैं फुरकान। अच्छी बॉल और अच्छा शॉट खेला, लेकिन फील्डर मौजूद है। मिस फील्डिंग की फील्डर ने, और इसी मिस फील्डिंग के साथ 2 रन का इजाफा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की तरफ से, और इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। ਤੁਸੀਂ तो कई गायब हो गए, वेले टाइम लाइव बैठे रहते, कोई टाइम दे दिया करो। अच्छी बॉल, अच्छी शॉट, और 6 रन के लिए खेल दिया फुरकान ने। उम्दा शॉट खेली और 6 रन की अशद जरूरत थी अनेक क्रिकेट क्लब को। बहुत अच्छी शॉट, 6 रन के साथ स्कोर 60। बहुत जबरदस्त शॉट खेली और इसी शॉट की जरूरत थी इस बॉल पे, और इस
6 रन के साथ स्कोर 60 हो चुका है और 4 बॉलों पर जस्ट 16 रन रिक्वायर्ड, 2 छक्के और 1 चौका। 16 रन। जायद अली अपनी बॉलिंग स्टार्ट पर फेस कर रहे हैं फुरकान। फुरकान ने 2 फिर अच्छी शॉट खेली और ये 6 कैच है भाई। और ये कैच सीधी फील्डर के हाथों में। नो बॉल, नो अंपायर का इशारा, है। थर्ड अंपायर फैसला करेगा ये नो बॉल है या नहीं। अगर ये नो बॉल होती है तो ये टीके के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी ये बॉल। साहब मेरी बात सुनो। तो अभी थर्ड अंपायर फैसला करेगा ये नो बॉल है कि नहीं। अगर ये नो बॉल होती है तो एफएमटीके को ये बहुत बड़ा झटका लगेगा यहाँ पे। और ये नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। ये नो बॉल इनको महंगा पड़ सकता है, लेकिन देखना होगा क्या होता है मैच 4 बॉल्स पे। आखिरी 4 बॉलों पर जस्ट 13 रन चाहिए। आपको सिर्फ 2 छक्कों की जरूरत है 4 बॉलों पर। 500 दिरहम अनीक क्रिकेट क्लब को लकी रही यहाँ पे, फुरकान लकी रहे। पौने 3 और ये नो बॉल एंड दे नुकसानदेह साबित होता है एफएमटीके के लिए या नहीं, ये तो अभी नेक्स्ट बॉल पे पता लगेगा। और ये फ्री हिट है और फ्री हिट का फायदा उठा सकते हैं अबू बकर, और उठाना भी चाहिए उनको अगर ये मैच विन करना है। ये बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है उनके लिए फ्री हिट। इस सिचुएशन में ये फ्री हिट जो है वो बॉलिंग साइड को के लिए बहुत नुकसानदेह। अबू बकर सामने खड़ा है 0 पर। अबू बकर अपनी इनिंग की पहली बॉल फेस करेंगे, वो भी फ्री हिट। देखना होगा क्या सोच कर ये बॉल खेलते हैं। जायद अली जरूर थोड़े सोच विचार करेंगे इस पर कि सिचुएशन डू एंड डाई है। कैच बहुत अच्छा पकड़ा है, मगर कैच बहुत अच्छा ऐसी सिचुएशन में ये एक्स्ट्रा नो बॉल इस तरह बहुत महंगा पड़ सकता है। पहला बॉल वाइड था। 4 बॉल्स पर 13 स्कोर चाहिए ये मैच जीतने के लिए अनीक क्रिकेट क्लब को। फ्री हिट बॉल होगी। बॉल करने के लिए ज्यादा अपनी बॉलिंग स्टार पर मौजूद, फेस करेंगे अबू बकर। आपने डबल लिया था। 13 रन 4 बॉलों पे 13 स्कोर। अच्छी बॉल अरे यार जायद अली की तरफ से। डॉट बॉल चाहिए। लेग बाय का 1 रन। इस लेग बाय के स्कोर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64। लास्ट 3 बॉल्स पर 12 रन रिक्वायर्ड, 2 छक्के चाहिए जस्ट 3 बॉलों पर। स्क्रीन से 0 ब्रेक करो। और फुरकान सामने है और फुरकान का ऑलरेडी नजर बॉल पर बैठी हुई है और बाउंड्री लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा जायद अली बॉलिंग किस किस्म की करते हैं। जायद अली अपनी बॉलिंग स्टार्ट पर, फुरकान स्ट्राइकर एंड पर। यहाँ पर कैप्टन है तो अब बता नहीं बची। जायद अली ब्रेक आएगा। अच्छी शॉट खेल दी है, देखना होगा 6 रन के लिए खेल दिया फुरकान ने। बहुत उम्दा शॉट, बहुत उम्दा शॉट। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। कितना रह गया? 2 बॉलों पर 6 रन चाहिए। 2 बॉल्स पे 6 बहुत उम्दा। जैसा कि पहले कहा था वहीद भाई के अनीक क्रिकेट क्लब ने हमेशा की तरह आखिरी ओवर में 22, 24, 25 चेस किया हुआ है। 2 पे 6 रन, 1 छक्का चाहिए यहाँ पे। शॉर्ट बॉल कर दी ना। अनीक क्रिकेट क्लब ने हमेशा इसी तरह के मैचेस विन किए हैं और अब देखना होगा कि अब लास्ट 2 बॉल्स पे क्या रिजल्ट सामने आता है। 1 डॉट बॉल चाहिए यहाँ पे जायद अली को। जायद अली कंफ्यूज हो गए और ये वाइट बॉल दे दी। वाइड नहीं जीती है। अंपायर का इशारा देखना होगा वाइट। और ये वाइट बॉल, इस वाइट बॉल के साथ स्कोर 71। आखिरी 2 बॉलों पर 5 रन चाहिए। अगर 2 बॉलों पर 1 चौका भी लग जाता है तो स्कोर बराबर हो जाएगा। बहुत उम्दा लास्ट ओवर फॉर अनीक सीसी। कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड की बात है।
नो बॉल महंगी पड़ी है FMTK को। अच्छी बॉल जैद अली की तरफ से और 1 रन का इजाफा हो सकेगा इस बॉल पर और ये मिस फील्डिंग की वजह से 1 रन एक्स्ट्रा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट फुरकान की तरफ से और अबू बकर की तरफ से। एक बॉल पर 3 रन, बिल्कुल कल वाले मैच की सिचुएशन। 2 बने अभी। लास्ट बॉल पर 3 रन रिक्वायर्ड है, 2 रन स्कोर लेवल करने के लिए और 3 रन जीतने के लिए। सर वाइट थी ना, 6 पे वाइट गई, फिर 2 निकले। एक बॉल पर 3 रन चाहिए, सेम सिचुएशन जो कल वाले मैच में थी। अब देखना होगा जैद अली लास्ट बॉल किस किस्म की करते हैं। एक भाई नो बॉल इनको महंगी पड़ चुकी है FMTK को, और नो बॉल तो थी लेकिन उसके साथ वो आउट भी थे फुरकान, जिन्होंने उसके बाद भी 2 छक्के लगा दिए। जीता हुआ मैच था FMTK के लिए, लेकिन अभी देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या करते हैं। हनी क्रिकेट क्लब लगता है मास्टर है इस तरह के मैचेस में जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा लास्ट अपने 2 मैचेस भी इसी तरह जीते थे। एक ओवर में 25-24 रन चेस किए उन्होंने, अभी भी इसी तरीके से लास्ट ओवर में 23 रन चेस कर रहे हैं, 24 रन चेस कर रहे हैं। बहुत प्रेशर है इस टाइम बॉलर पर, लेकिन ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं। देखना होगा लास्ट बॉल किस किस्म की करते हैं। ज़्यादा भी अपने बॉलिंग स्टार्ट पर और फेस करेंगे फुरकान। ऐसे ही सेमीफाइनल बड़े मैचेस देखने को मिलने चाहिए जिस तरह के आज का मुकाबला हुआ। ये भी ज़्यादा अली अपने बॉलिंग स्टार्ट पर फेस करेंगे फुरकान। इनिंग की मैच की लास्ट बॉल, भी कर लेते वो। अच्छी शॉट खेल दी और कैच हो सकता है, ये कैच विन और 6 रन के साथ ये मैच विन कर लिया हनी क्रिकेट क्लब ने। बहुत जबरदस्त मुकाबला किया हनी क्रिकेट क्लब ने और ये एक छक्के के साथ इन्होंने मैच विन किया। FMTK को वही नो बॉल महंगी पड़ी। हम मुबारकबाद पेश करते हैं हनी क्रिकेट क्लब को फाइनल में क्वालिफाई करने में उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सही यार, मजेदार में आ जाओ। नेक्स्ट सेमीफाइनल कॉम्पिटिशन वर्सेस हॉरिजॉन। दोनों कैप्टन से गुजारिश है विकेट पर आ जाए ताकि टॉस जल्द से जल्द टॉस किया जाए और मैच को स्टार्ट किया जाए। ठंडे बड़े यार गुजारा है। आ जाइए।
खतरनाक दौर था और आपकी जबरदस्त का टेस्ट था तो आप क्या टीम है उन्होंने क्या बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की सारे दोनों मैच का रिस्पांस किया बहुत जबरदस्त है बहुत ऐसी है तो आप रिपोर्ट के अंदर आपकी क्या फीलिंग है सब फोकस है खाने पे गए अब बस आपने वो डब्बे का वेट लास्ट ओवर में इतना बड़ा ना यहाँ जो किलोमीटर बॉल जो बॉल लग जाता ना एकदम वो आ रहा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था वो डब्बे बॉलर ने लेकिन वो जो नो बॉल थी उस नो बॉल ने हमको बचाया तो वो नो बॉल आपके साथ नंबर होते आप क्या समझते हैं से एक अगर वो नो बॉल ना होती तो एक दफा राहुल बार में है एक दफा यकीनन ये दस का है 10 का टेस्ट होता है इसकी तो दोनों टीमों को बात होती है लेकिन आप बेहतर साबित हुए के मुकाबले में ऑल द वेरी बेस्ट फाइनल स्टार्ट मैच नहीं हुआ खालिद भाई 10:40 पे मैच स्टार्ट होना चाहिए अंपायर मैच स्टार्ट कराए यार बैट्समैन अंपायर प्लीज यार आपका बैट्समैन नहीं आ रहा अब अंपायर क्या करेगा हाँ मेरा तो माशाल्लाह कमाल कर दिया हमारे बरकतदार हसन ने भी माशाल्लाह बड़ा इसको डिज़ाइन किया था हमें। तो आज का माशाल्लाह कमेंट्री के हवाले से कमेंट्री के हवाले से जो है ना आज बहुत अच्छा रहा और ओवरऑल गेम बाई गेम का जो है ना बॉल बाई बॉल का हमें सारा स्टेटस होता रहा और अभी भी कर रहे हैं और होपफुली जो है इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छा जो है ना मिशन है हमारी आज के इवेंट की जिसमें मैच के साथ साथ जो है वो कमेंट्री को भी जो है अच्छे तरीके से जो है ना वो दिखाया जा रहा है। जी बासित भाई आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। भाई मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ बैट्समैन को अंदर भेजें प्लीज। ऑरिजिन नो टाइम बहुत टाइम देते हैं यार टेनिस इन्होंने ना पैड लगाए हैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग। हाँ ओके जी नहीं भाई अस्सलाम वालेकुम।
ये जो हम टूर्नामेंट देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पैड का फर्स्ट बैट्समैन क्यों रेडी नहीं है भाई बैट्समैन? और कल जैसे कि यहाँ पे मैचेस हुए ऑलमोस्ट 17 मैचेस, कल हमें 17 मैचेस देखने को मिले जिसमें से 4 से 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें लास्ट बॉल पे दौड़ के आए और यहाँ बॉलिंग और बैटिंग का एक अलग म्यार नजर आ रहा है। जो टेनिस बॉल क्रिकेट है जो ऑलरेडी दुनिया में इस टाइम फेम हासिल कर रही है, उस फेम को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो टेप बॉल के स्टार्स अभी क्रिएट हो रहे हैं, वेरी वेरी गुड स्टार्स, मतलब उनकी जो फ्लिकें हैं, उनकी जो बैकफुट शॉट्स है, फ्रंट फुट शॉट्स है, ये बहुत अमेजिंग है। और इसी के साथ साथ जो बॉलर्स हैं उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि वो किस टाइटनेस के साथ सारी बॉल यॉर्कर लेंथ की ट्राई करते हैं। टेनिस की खुसूसियत है बॉलर्स की कामयाबी ये टेनिस में कि वो बिल्कुल टॉपिंग क्रीज के ऊपर यॉर्कर मारे। और हम ऑलमोस्ट कल से ये बॉलर्स को देख रहे हैं कि बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। और ये आज का सेमीफाइनल 1 जो हुआ है जिसमें अनीक सीसी वर्सेस FMT एक और वन हमने देखने को मिला है। मतलब सेमीफाइनल नहीं हो सकता। लास्ट बॉल 3 runs remaining and they have made a 6। मेहदाद का छक्का लगा के अनीक सीसी ने मैच जीता है। और दाद देनी पड़ेगी हमें फुरकान को कि जिसने जिस लेवल पे जाके बैटिंग की है और अबू बकर को भगाया है। बहुत प्यारी बैटिंग फुरकान की तरफ से। थैंक यू। नहीं भाई मैंने तो मैच जो वो हम ये बाद में दे देंगे। हर मैच जीती हुई मैंने तो मैच लेकिन जीती हुई टीम का है। और ये एक और कैच सीधा फील्डर गैप में और आयरन सीसी का दूसरा विकेट गिर गया। कैच कौन लिया? बैट्समैन आ जाओ बैट्समैन। मजिशियन तगड़ा मैच होगा इंशाल्लाह। भाई कैच कौन लिया? मजिशियन किया अलग ये किया। Team that lost 2 wickets here. 2 wickets. Only scoring 1 run. Team is struggling now. और वो फील्डर बेटा 1 मिनट के लिए पीछे पड़ा हुआ बॉलर आज के सेमीफाइनल बॉलर मैन ऑफ द मैच फुरकान अनीक सीसी के फुरकान जो 12 गेंदों में 29 रन बनाए 3 छक्के। यार इसे पूछ लो। आज के मैन ऑफ द मैच जिसका नाम है जुनैद। इशफाक भाई यार उनसे पूछो ये बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द स्टंप। इशफाक भाई पानी किधर है? पानी नीचे पड़ा हुआ है। अनीक सीसी से नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा अब्दुर्रहमान इधर ही है। मैन ऑफ द मैच सामने को भाई जान अदनान भी आ जाए। 11 रन बैटिंग बॉलिंग में ऑरेंज सीसी के 2 ओवर में 2 रन पहला ओवर है 2 विकेट के नुकसान पे 2 रन अब तक बन चुके हैं। ये शॉट सीधा फील्डर के हाथ में मिड विकेट के अंदर। ये जी लास्ट बॉल है ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। तौकीर अजमत ऑन स्ट्राइक, 3 runs 2 wickets। हॉरिजॉन्टल स्टार 11 थोड़ा पे अभी टफ टाइम पे। ब्यूटीफुली बॉल्ड, लेंथ सही है, लाइन पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आई गेस अटैकिंग द ऑफ स्टंप बेहतर रहेगा। वाइड बॉल, आई थिंक what we've seen in this tournament is every time the first over slow start to the batting team. So you never know when the batting team can clutch up. You've got 5 more overs to go after this ball. Beautifully ball up in the air. Fielder coming underneath it. And it's taken. 3 wickets gone for Horizon Star 11. Very beautifully bowled. Bowling it at the right length. Very hard to hit, especially with the air coming at the opposite side. Beautifully bowled, beautifully taken, and Horizon Star 11 is under trouble. नेक्स्ट बैट्समैन आ जाओ सर। हेलो फील्डर। I think attacking the full length is better than bowling short. Even bowling full tosses is better, as we see in the previous match. New batsman coming in,
जल्दी आओ बॉल फुरकान यस डायरेक्ट कर फुरकान वेल वेल Horizon Star 11, 4 runs, 3 wickets in the first over. Beautifully bowled ग्रे वाली by Mohsin. Lala Sajjad Afridi coming in as the batsman. The new bowler, left arm fast bowler Shahzad bowling Asghar. left arm over the stumps Bowler coming in. white ball White ball, targeting the pads as what he seems to intend. As we've seen in the previous matches, targeting the pads, bowling full ball is what gave them wickets. And even in this match, the first 3 wickets was scored due to bowling full ball. So beautifully intended at least. Batsman seems to check the ball if there's anything wrong. It's a lot of view on the outfield. Beautifully balled, beautifully hit straight in the hand, and that's a 6. Right flat 6, picked up really well on the full ball. Good delivery indeed, however, batsman picked it up really well. Beautiful shot for maximum. आजा बैट्समैन 11 runs, 3 wickets. The intent was there, good ball, but the batsman has picked up really well. Bowling full is what they need to do, and that's what he's doing. Short ball, and that's another 6. It's huge. That's a boundary. That's all 6. But beautiful shot. Bowling shot is never the intention that the bowler needs to have. Every short ball has been put away for either a maximum or a 4. Beautiful shot. The wicket is quite slow. When the ball bounces, the batsman gets a lot of time. So bowling full is what the bowler needs to do. Horizon Star 11, 19 runs. बैट्समैन बॉलर साइड चेंज बॉलिंग लेफ्ट First आर्म 3 अराउंड द balls on the स्टंप second over. Mr. Hassan, what would you do in this situation if you were in the batting side where you've got 3 wickets? Oh, beautiful delivery! Inside edge, and that's gone! That's beautifully taken. What a catch! This has to be the catch of the day. Has to be the catch of the day. Beautifully bowled, beautifully fielded, and the batsman is now where it seems that the umpire hasn't given it out. Seems to be a commotion in the middle of the ground. Ball right in front of the umpire. But what the umpire says is the final decision. And now
commentary box here. It seemed like that was a very clean. There, let's move on with the games. There's only a few minutes for each over, and each inning takes about 35 minutes, so just get on with the game. Shehzad Asghar has been bowling really well. 2 balls, 11 runs. Well, from the scorecard, it doesn't really seem that well, but he has been bowling well, bowling full. But that one's a wide, he'll have to re-bowl that one again. The keeper was not impressed with that. The fielder has a mount. Can't be doing that with the umpire. Love emotions, love aggressive nature being shown on the ground today. Oh, that is well bowled. It's a top edge towards no man's land, towards point, and the fielder, the cover fielder's got a long chase, and he saves that. That'll be a couple of runs, and he has fielded that really well. Well bowled. Oh, that's a boundary. Short ball, run short. Oh, my mistake. That was the umpire says that the runners have run one short. That means that the batter didn't reach to the side of the crease in time completely, so he didn't complete that run. That will be not counted as a run. So in actuality, they only ran one run. Horizon Stars are at 16 runs for the loss of 3 in 1.3 overs. Nomi Malik is on strike, and the bowler is Shehzad Asghar. सर जी नहीं टच करके गए, मैं बोल रहा हूँ हर बात का रिव्यू लेना है, मैं चला जाऊँ आउटसाइड. That's well bowled, full and straight into the pads, well, onto the legs actually, since they're not wearing any pads, but yeah, onto the legs, and that will be one leg. Other than get hit on the legs. I think spirit of the game. Shehzad Asghar is bowling really well. Last ball of the over. Oh, he's bowled that full. That is a very good delivery. Good bowling by Shehzad Asghar. The batsman could only manage to edge it towards long off for a single. A very good over. It comes to an end. Nomi Malik on 13 runs, playing 7 balls. Lala Sajid the field. Final will be played between the Magicians and ANEQ CC. But you never know with this game. Cricket is a very unpredictable game. Now this bowler is quite interesting. Mohsin Breaker is quite interesting. Runs like a fast bowler and then bowls a leg spinner. That is very good. Interesting bowling. It's a very good shot, but that is a very interesting bowling action. A very interesting bowling style. I think I've never seen this in cricket. A leg spinner with a fast bowler's run up. Very interesting here. Very interesting. Nonetheless, the first ball goes for a boundary, and I was right. Mohsin Breaker has taken 3 wickets in 1.1 overs, only giving away 8 runs. So this is really good bowling. Leg spinner with a long run up. Lala Sajid the free on strike. Second ball of the over will be bowled. Oh, reverse sweep, and he swept that away. Will that go for a boundary? Long chase, and he stopped that. Good fielding by the cover fielder. That will be a couple of runs. Good bowling, a good shot, and some good fielding. Good cricket overall. 25. Horizon Stars are at 25 runs for the loss of 3 wickets in 2.2 overs, with a current run rate of 10.71. Lala Sajid Afridi 7 runs.
playing 3 balls, scoring 1 boundary with a strike rate of 233, a decently high strike rate. Quite humble actually when it comes to this format. Mohsen Breaker, 3rd ball. Oh, and that is short, and he's pulled that away, but he's got fine leg and a fine leg and a square leg, but that's gone into the gap, and that's another boundary. A good comeback by the Horizon Stars. Could be better bowling, a few bad balls that need to be put away, and they are doing exactly that. So good batting by Lala Sajid Afridi, putting away the bad balls. Mohsen Breaker has to bowl 3 good deliveries to get his team back in. 87, 88, 89, 90 आप लोग से पैदा भी नहीं होंगे। हाँ मेरी नेक्स्ट 95 है बस फिर। Oh, he's bowled a seam-up delivery, and that's a good change-up because the batsman was expecting a slow, loopy leggy. But that's hit him on the leg, and that'll be 1 leg by. Good bowling by Mohsen Breaker. But I think that was influenced a lot by the keeper. The keeper was keeper's doing a good job behind the stumps, really helping guiding his bowlers to bowl the right ball in the right areas. कोशिश नहीं की यहाँ चूँकि बच्चे जो होते हैं ना वो उनको टाइम नहीं होता उनके पास। Oh, that's well ball. It's a leg spin. It's gone straight up. The keeper's underneath, and he's taken it. Mohsen Breaker has taken 4 wickets. That's the class of a leg spinner. You need to have a leg spinner in the squad to take those quick wickets. This is really good bowling by Mohsen Breaker. Well bowled, very well bowled. Nomi Malik has been dispatched. He has to go back to the pavilion knowing that he's played a shot that he could have outplayed towards the cover region, considering the ball was turning away from him. Very well bowled, Mohsen Breaker. ज़माना मुख्तलिफ था, ज़माने में खेलोगे कूदोगे हो गया खराब। Horizon Stars, losing 4 wickets, have only scored 30 runs in 2.5 overs. The next batsman that walks in is Ali Zain, right-hand bat, played 5 games, scoring only 14 runs. So the stats are not very impressive, but let's see if he can impress us on this very day on a big stage game. जो क्रिकेट है ना Oh, he's bowled really well. He's played that towards the cover region for a couple of runs. Now it is just 1 run. Well bowled, Mohsen Breaker. Very well bowled. The leg he takes 4, only giving away 14 runs in 2 overs. This is amazing figures. These are some match-winning figures from the bowler. Very well bowled. जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं ना जब वो प्रैक्टिकल नहीं होती तो वो तो प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। Horizon Stars 31 off for the loss of 4 wickets in 3 overs, where the projected score is 60 runs. If I'm being honest, 60 runs is still a fighting total, but you're better off scoring about 80, 90. I feel like 90 is it's a match-winning score. If you score 90 on this pitch, you're winning the game. 60, you can still fight back. Anything in between, it'll be a good match. The new bowler to the crease is Razak, and taking strike off this new bowler is Lala Sajid Afridi. Horizon Stars 30 for the loss of 4 wickets in 3 overs. So the 4th over. Oh, that is well played, played straight, and that's a 6. He hit that straight as an arrow, and that's gone over the boundary for a huge 6. That is very well played. No respect for the bowler, no respect for that first ball. Lala Sajid Afridi just wants to get on with things. He just wants to end things very quickly. That shot must have hurt the ego of the bowler. Under a little bit of pressure now. A good matchup here. Moving around the wicket now. Oh, he's bowled that 4 and he's flicked that away. Could this be a boundary? It'll be a couple of runs. Might have just clipped the pads on the way. May have been no bat involved, but that is well bowled and well played. A good comeback by Razak, bowling it nice and full from around the wicket onto the pads.
for just 1 run. Lala Sajid Afridi is on the move now. 17 runs off 7 balls, 2 boundaries and 1 6. ऑफिस में कामयाब है बहुत सी मिसालें ऐसी हैं वाकई ऐसा है मेरे अपनी मतलब कसम से ऐसे देखें Oh, and he has bowled really well. That will be a couple of runs. Just 1 run. Razak, very well bowled, bowling it on the length, making the batsman play a bad shot, playing that on the inside of the bat, getting an edge, not middling that one bit. Ali Zain is on strike, playing 1 delivery, scoring 0 runs. Razak, 3 balls, 7 runs. He's doing well. He's doing very well. Just needs to land those Yorkers. He's got pace. He's got height. He just needs line and length. Just got to land those Yorkers. Make sure everything's nice and full. चले बैट्समैन Oh, he bowled that short, and that's been played towards fine leg. He's fielded that. If I'm being pretty honest, a lot of the batsmen here should have put that short ball away. Ali Zain has only managed to find the fielder. He could have played that better. He's still batting really well. ताकि लोगों को थोड़ा बहुत से लोग जो है ना उनको सोच समझ आए कि अभी भी हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स खास तौर पे Good comeback by Razak after being hit for a massive 6 straight. मैं देखता हूँ Next 3 balls have just been singles. आज भी तनवीर मंडी का नाम Oh, well bowled. वनडे खेला हुआ है Razak has come back with an absolutely blistering few deliveries. 5 deliveries, 9 runs, no wickets. Lala Sajid Afridi has mistimed another one. Horizon Stars 41 for the loss of 4 wickets in 3.5 overs. पढ़ाई और क्रिकेट साथ चलेगी क्रिकेट किस्मत ले जाएगी पढ़ाई आपको दिख जाएगी जो ये यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है डॉक्टर वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और टॉप Bowling full, well bowled. Lala Sajid Afridi has managed to mistime another one. That is good bowling from Razak. Bowling it nice and full, slowing up his pace a little bit just so he can get that line length. He's bowling really well here. A very good comeback, 1 over 10 runs. Bowled a very good comeback after being hit for that 6. Horizon Stars for 42 runs for the loss of 4 wickets in 4 overs. एक बॉलर भेजेंगे नहीं वो आप बिल्कुल सर पिच के बाहर हेलो सिलेंडर में खेला हुआ है तो वो चीज़ें मौजूद है स्टेट भी चला इंटरनेशनल मीडिया पे Shahzad Asghar is back to bowl his second over, which is the 5th over of the game. I can't lie, the Magicians are bowling really well. They've restricted the Horizon Stars to 42 runs in 4 overs. Shahzad Asghar bowling the 5th over of the game. Lala Sajid Afridi taking strike. He is looking quite angry. He seems like he will be smashing everything from now on. Oh, he's bowled that full and he's flicked that away towards square leg. That will be 1 run. That is well done. If I'm being honest, in the last game there was some really good running. This game lacks good running. There've been a few good shots, but not a lot of good running. Running needs to improve. Ali Zain on strike, 7:04. Oh, he's bowled at 4. That is well bowled by Shahzad Asghar, bowling really well. 1.2, 15 runs. The current run rate is 9.92. Not good enough for this format. 6 overs, you need to get anything above 18. 18 above is a winning total. 43 for the loss of 4. Horizon Stars have to do something really special here to bring them back into this game. Oh, he's bowled an awful delivery and that's been hit. Will this be taken? And that's out. What a beautiful catch. Good bowling and they have dismissed the very dangerous Lala Sajid Afridi. Very good bowling by Shahzad Asghar.
Anything full is extremely hard to hit on this ground because of the pace. The pace is so slow, you can't get underneath it. After the ball pitches on this wicket, it slows up exponentially. It's so difficult to hit a shot that is hit a shot on a ball that is really full. Well bowled, Shehzad Asghar. इंटरनेशनल जितने भी खिलाड़ी हैं ना, मोहम्मद यूसुफ वगैरह बहुत पीछे हैं. Rising Stars losing 5 wickets. Next batsman walking in is Masood Ahmed, right hand bat. Didn't get to bat much. He's played 8 games, scored 4 runs, and taken 2 wickets. So he's probably the all-rounder of the team. Masood Ahmed walking in. Correction, it was Ali Zain who was dismissed, who played that extremely high shot. That ball went into the night sky. Last ball, and he's edged that. The keeper takes it towards third man, and that is really good bowling by Shehzad Asghar. Masood Ahmed threw the kitchen sink at that. He threw everything at it. He really wanted to send that ball to the moon, but only managed to find the keeper. Luckily, it wasn't out. Went to the keeper on the 4. रेडी हो जाए सर जल्दी. Last Sajid Afridi, 15 of 9 balls, 2 boundaries. He hasn't managed to middle anyone after that one good boundary, so he is struggling. Oh, he's flicked that away off the pads, and that's well fielded. This is some really good field positioning. They know that Shehzad Asghar bowls left-arm pace from around the wicket, and he's bowling in the stumps, so they've got a deep square leg, deep mid-wicket, 2 deep mid-wickets, deep long on, and another deep long on. So they've got about 7 fielders on the leg side, because he's bowling everything on the pad. So this is very good and very clever bowling. Oh, he's bowled that well straight to the fielder. Will this be one? On the bounce, the fielder on final leg takes it on the bounce, the keeper takes it on the 4. And that is well bowled by Shehzad Asghar. Shehzad Asghar bowled to the plan, following the keeper's instructions, and this has been a very good over. Horizon Stars are 46 with a loss of 5 in 5 overs. Last over, can they manage to score 20 runs to make this a competitive total? Correction, they need about 30 runs to make this a competitive total. Zishan Azam is the new bowler, right arm fast bowler, bowling the very crucial final over. This could end up being a very good over or being a very bad choice. He's bowling his first over and bowling the very crucial final over. Masood Ahmed on strike. Keep in mind that Masood Ahmed hasn't scored a lot of runs in this tournament. And he's put that away! I should not be saying a lot of these things because he's put that into the stands, and that's a 6er. What a beautiful shot by Masood Ahmed. What a beautiful shot. This is finally his chance to showcase his talent with the bat. He's done it with the ball, but now he's going to do it with the bat. Zishan Azam is instantly under pressure. His ball is slow and into the gap towards the fielder on the bounce. That'll be 1. He played that towards mid-wicket. That's a better length to be bowling, Zishan Azam. That's a better length. You'd rather be too full than too short on this wicket. He's a full delivery and he's pumped that for 6. That is too slow, and Lala Sajid Afridi has hit that into the stands. What a beautiful shot. This is the game-changing over. 59 for the loss of 5 in 5.3 overs. Lala Sajid Afridi 21 of 11. A bit more pace, and that is a much better delivery, and he's nicked that. Keeper takes a very simple catch behind the stumps, and Lala Sajid Afridi has to take the long walk back, but he's played a handy knock of 21 runs of 11 balls. Rising Stars are 59 for the loss of 6. They've got 2 more deliveries to play with. If they hit a couple of 6s on this delivery,
they can manage 71 runs. Qadir is the next batsman to walk in, and he will be taking strike to face these last two deliveries. Zishan Azam, a very good comeback, bowling 4 deliveries, being hit for 2 sixes, 2 dot balls, and 1 wicket. And he's bowled really well, and that's another wicket! A hat-trick chance. Very good, very eventful final over by Zishan Azam. He's taken 2 wickets in 2 balls. Qadir has to take the walk back. A golden duck for him. A golden duck is never great. It really makes you question your life choices. Well, last over. A very eventful last over. The last ball left. Could Zishan Azam be the hero and get his hat trick? Or will he be dispatched for another 6? First hat trick of tournament. First hat trick of the tournament. I guess. Shahbaz Ahmed is the next batsman to walk in. He will be under a bit of pressure, but he will still have to be selfless and go for that 6. Hat trick ball. And it's a hat trick! Beautiful bowling by Zishan Azam. He takes a hat trick, a very good comeback. 3 wickets and 3 balls, a very good bowling. He has proven us all wrong and showcased his bowling talent. Take a bow, big man. You've deserved it. 60 target है. The target is 60 runs. And Zishan Azam has changed the game, made it more entertaining for us. Went for a couple of 6s and then took 3 wickets and 3 balls. 60 रन तो टोटल कर रहे हैं. 60 तो कर चुका ऑलरेडी. He is the man of the match. This has been an amazing showcase of professional bowling. If you look at the bowling card for the Magicians, उससे फर्क नहीं पड़ता. ये दिखते हैं ना 3 है ना 3 तो 60 रन है. if you look at the bowling card for the Magicians, Mohsin Breaker bowling 2 overs, giving away 14 runs and taking 4 wickets. He bowled really well up front. Then Shehzad Asghar bowling 2 overs, giving 17 runs and taking 1 wicket. Another very good spell. And Razak bowling 1 over, giving 10 runs. Then Zishan Azam with the golden arm, the man with the golden arm, bowling 1 over, giving away 13 runs and taking 3 wickets in 3 balls. A hat-trick over well bowled. Mr. Khalid Waheed would be taking over for a bit. So, what's your opinion on the first innings so far? The inning has been a roller coaster ride. Initially it was on bowling side, then partly went on the batting side, then finally with a hat-trick, the whole balance twisted towards the bowling side, and Zishan Azam with the golden arm, as you correctly said, he grabbed 3 wickets, miserly, with 3 balls. And how many runs? 13. If you can just check for me please. 13 runs. मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल में वसीम और बिलाल मौजूद हैं. मैं इनसे आखिरी विकेट जो है, जो कि ज़िशान आज़म जिन्होंने आखिरी ओवर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त ओवर किया है और उन्होंने टीम को ही रैप अप कर दिया है. वरना हम ये सोच रहे थे शायद ये स्कोर 70-75 या इस पर जाएगा, लेकिन 3 विकेटों ने एक फुल स्टॉप लगा दिया बहुत बड़ा. तो वसीम, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, जिस तरीके से ज़िशान आज़म ने का आगाज़ किया था तो उसने बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया. पहले 2 बॉलों पर 2 सिक्सर्स आए और उसके बाद कम बैक किया, 3 विकेट तो लगातार. और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी आज़म की बहुत उम्दा कम बैक किया और हॉरिजन को जो है वो रिस्पेक्ट किया और 59 पे का हदफ दिया. तो बहुत ज़बरदस्त. तो अब देखते हैं कि अब जब टारगेट कैसे जो है वो हदफ को अचीव करता है. हॉरिजन की बॉलिंग कैसी करती है, क्योंकि रन बोर्ड पर इतना नहीं है. देखा जाए तो 10 की एवरेज के बॉल पर कुछ भी नहीं है. बहरहाल क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. सेव होने पर तीसरा भी सेव हो जाते हैं.
6 ओवर में 60 रन करने हैं द मैजिशियन को, ये मैच जीतने के लिए, फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। हो जाएगा हमारा काम। उसकी रीज़न ये है कि लेटर के ऊपर मैंने देखा हाँ समझा है, वो आपकी बात आपकी नॉलेज देता हूँ आपका। वो ये कहता है कि जैसे अनाउंस किया उसके 20 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना, तो हमने 2 दिन बाद अप्लाई किया। चलो जी चलो प्ले करो। ये जो फील्डिंग टीम है ना, कल 21 किया था 5 ओवर में। अभी जो बैटिंग के लिए आए हैं, अच्छा इनकी और वो भी विदाउट लॉस। उस्मान खान ने स्ट्रगल किया था, 11 बॉल में 18 आउट हो गया था। उनकी टीम इतनी बड़ी टीम और क्वालिफाई नहीं कर सकी। हार्ड बॉल में तो और था भी वो सीमेंट के ऊपर, सीमेंट से खेलना बहुत आसान था। अच्छा उधर था मैच। स्टार्टिंग में जब ओवर स्टार्ट किया था तो ऐसा लग रहा था कि 90 के करीब लेके जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 6 लगाया था। तो उसके बाद हम ये बातें कर रहे थे कि बॉलर कौन है, बॉल दे दे, बॉल किधर है? बॉलर को ओवर दे के देखें कि क्या बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा उसने कम बैक किया जब एक 6 लगा। और अब द ओवर पोजीशन जो है स्ट्राइक पे आ चुके हैं और बॉलर भी तैयार है। और अंपायर से रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्दी जल्दी स्टार्ट करवाएं, क्योंकि टाइम नहीं है, इसके बाद फाइनल भी स्टार्ट करवाना है। बॉल अरे बैट्समैन कौन है? बॉलर इधर से कर रहे भाई। मैंने भी बॉलर वेट नहीं हुआ। ये सेकंड सेमीफाइनल है हॉरिजॉन और बैट्समैन बॉलिंग लेफ्ट आर्म ओवर द मैजिशियन के दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है सेमीफाइनल। और अब देखते हैं कि कौन इनमें से विन करता है, और जो सेकंड जो फर्स्ट टीम फाइनल में गई है कौन इनके साथ इनके मतलब मुकाबले होंगे। तो अब मोहम्मद शरीफ और राशिद हबीब। अभी द ओवर मैजिशियन की तरफ से बैट्समैन आए हैं आमिर शरीफ और राशिद हबीब स्ट्राइक पे मौजूद हैं। आमिर आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना फर्स्ट बॉल को रोका है, सिंगल रन लिया। अब बॉलर कौन है? फरीद मुख्तार। और हॉरिजॉन की तरफ से जो अटैक बॉलर आए हैं वो फरीद हैं मुख्तार। और आप देखते हैं कि फरीद अपनी टीम के लिए अच्छे साबित होते हैं या महंगे साबित होते हैं। आप देखते हैं कि अब स्ट्राइक पे मौजूद हैं राशिद हबीब स्ट्राइक पे मौजूद हैं और सामना करेंगे फरीद का। यहाँ पे बैट्समैन का पता चलेगा ट्रफ पिच में, क्योंकि सीमट और ट्रफ में बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही और बड़े और खूब बहुत ही अच्छे अंदाज से 6 लगाया राशिद ने। क्या बात है, अगर ये ऐसे ही लगाएंगे हिट तो मे भी हो सकता है कि 3 ओवर्स में पूरा कर दें ये, क्योंकि द मैजिशियन ओवर इज अ टॉप टीम इन दिस टूर्नामेंट। और अब देखते हैं कि बॉलर अपना माइंड का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या वैसे ही बॉल करेंगे। ओह वाह, बहुत ही अच्छे अंदाज स्लो बॉल की है। और समझदारी इसी को कहते हैं कि बॉलर ने जो है पहली बॉल आप लोगों ने देखी और अभी सेकंड बॉल बहुत ही स्लो की और बैट्समैन को जो है मौका नहीं मिला समझने का। तो अब मैं जो है खालिद भाई के हवाले करता हूँ कि वो अपने इस कमेंट्री को कंटिन्यू रखें। ये राशिद हबीब का बहुत ही खूबसूरत छक्का और अगले लिए फिर, और ये
कट लग के बिल्कुल बॉल गई है फाइन थर्डमैन की तरफ। फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और बॉल इज बैक टू कीपर। जो बैट्समैन है राशिद हबीब, बॉल को चेक करते हुए वापस बॉलर के हाथ में। कारी साहब वो आपके पास एक माइक था छोटा वाला, वो उस माइक के साथ रिसेप्टर भी चाहिए, ऐसे होगा नहीं। जैसे रिसेप्टर बोले तो कहना पड़ेगा वो उसके साथ ना। इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं वो हाँ नहीं वो उससे काम ही चलेगा नहीं, वो मोबाइल पे अपने बात कर रहे हैं। मुझे अपनी एक वीडियो बात करना। अच्छा 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 ठीक है, तो उसको फिर बताना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, किसी को आप बात करो। ओके चेक जो चेक करें कौन है 2 मिनट में फरीद अपने ओवर की 5वीं बॉल, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस वाइट बॉल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10। फरीद अपने बॉलिंग स्टार की तरफ बढ़ते हुए पहले ओवर की 5वीं बॉल करने के लिए आमिर शरीफ स्ट्राइक लाइन पर मौजूद। आमिर शरीफ पहले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे अपनी उम्दा बैटिंग की वजह से। देखना होगा इस मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत उम्दा बॉलिंग फरीद की तरफ से, बिल्कुल बॉल को समझ न सके आमिर शरीफ, बीट हुए। 5 बॉलों में इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 10 बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर की लास्ट बॉल करने के लिए फरीद अपने बॉलिंग स्टार पर मौजूद। आमिर शरीफ करेंगे फेस। वाइट बॉल, बहुत उम्दा बॉलिंग, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस वाइट बॉल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 बगैर किसी नुकसान के। बॉलर को स्कोर पे कंट्रोल करना होगा। हदफ जस्ट 30 बॉलों पे 60 रन का है। फ्री बॉलिंग स्टार्ट पर एक दफा फिर वाइट बॉल। लगातार 3 वाइट बॉलें कर चुके हैं फरीद। एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि सिर्फ 60 रन का हदफ है। डैमेजेशन को जिनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हम पिछले मैचेस से देखते आ रहे हैं। पहले ओवर की आखिरी बॉल, सामना करें आमिर शरीफ। 12 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले सर बॉल करें, बॉल करें सर। फरीद बॉलिंग स्टार पर मौजूद, फेस करेंगे आमिर शरीफ। वहाँ पे ना स्टैंडीज के साथ थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, स्पीकर भी साथ ही खड़ा हुआ है, तो ज़रा 2 मिनट के लिए सिर्फ कमेंट्री रोक दें। ओके ओके थैंक यू कर लेना। ओवर, नेक्स्ट बॉलर। इस पर करना हो भी जाएगा। 12 runs from the first over. Beautiful batting by the Magicians. बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। Farid Mukhtar giving away 12 runs in the first over with Amir Sharif on 1 run from 3 balls and Rashid Habib on 7 runs from 3 balls. The Magicians is a very strong batting side, very strong, scoring 120 last night without losing a single wicket. So it's going to be a very tough run for 11 Cricket Club. They have to ball right on the deck, targeting a good area. So it's going to be a tough one for the bowlers, but it's very doable if they can get quick wickets or they can manage to bowl absolute yorkers. The Magicians performance from 1 over, 48 runs required in 30 balls with the required run rate of 9 runs. The new bowler, right arm fast bowler Kadir. Rashid Habib on strike. Bowler coming in. Edged, keeper catches it and it's gone. Beautiful bowling, beautifully bowled, full ball, caught behind by the keeper. Very well taken by the keeper. Very good bowling.
And Rashid Habib departs for 7 runs from 4 balls with hitting 1-6. It's a very good batsman, scored a lot last night, and unfortunately he has to go. Beautifully bowled, well bowled by the bowler, targeting the full length area. That's what they need to do. It's going to be a tough one, but it's very doable. Batsman name? Huh? The Magicians require 48 runs from 29 balls. A new batsman, left-hand batsman Mohammad Akil. The Magicians require quick wickets to win this match, in my prediction. If they can get quick early on wickets, it's going to be tough for the Magicians to clutch up. But it's going to be a tough one. Keep on bowling on the full length area, and that's all they'll get wickets from. Batsman bowling right arm over the stumps. 5 to go. Seems to be a change in the fielding. Mohammad Akil on strike. Qadir bowling his second ball of his first over. Beautifully bowled up in the air. Goes towards deep cover. Deep cover is on the chase. Beautifully fielded. Beautifully fielded. Very well fielded by the fielder in deep cover. Beautifully bowled as well. Kept it full and straight. Very beautifully bowled. Bowler seems to have a conversation with the umpire. Maybe checking if the ball is right or not. Amir Sharif on strike, facing Qadir's third ball of the over. Oh, it's a wide delivery. It's a wide delivery. The intent was there, but he needs to keep the line straight, keep it straight and simple, keep it bowling full, and let the ball do its thing. The Magicians require 46 runs from 28 balls with the required run rate of 9.86 and the current run rate of 10.50. Bowler coming in. That's beautifully bowled. Good length. Batsman calls for 2. Oh, and he declines. Beautifully fielded. Well fielded. Good throw. And overall, a very good fielding. The Magicians 15 runs, 16 runs, 1 wicket, 4 balls. Mohammad Akil on strike. Ball coming in. Oh, it's a very good delivery, and the umpire signals that as a wide. It's a very tough call for the umpire, but he's given it a wide. Very well pitched. Ball that same length, and no one's going to hit you for 6. Very beautifully bowled. 16 runs from 1 and 1.3. Bowler coming in. Mohammad Akil facing. Oh, beautiful delivery. Very good pace. Perfectly pitched. Beautiful line, and the batsman just swung for hope. Very decent match here. Very high quality match here. Both teams trying their best to win this match to see who will come out on the top. It's going to be a tough match. I predict it's going to go till the last over, and that's when we'll see who's going to clutch up more. Again. Oh, up in the air, keeper coming underneath there, seems to be a similar catch, and that's out. Beautifully bowled, batsman swung for his life, and he ended up edging it straight in the air and beautifully caught by the wicket keeper. Very good bowling by Qadir, giving only 4 runs away, but getting 2 wickets in his over. The Magicians seem to be in trouble with this type of bowling against him. Perfectly pitched, very good pace, very good fielding. This is a match you need to be tuned in for, guys. It's a very good match.
44 runs needed in 25 balls for the Magician. Record run rate was 8 from the first over and now is 10.56. So it's going to be very tough, very tough. Imran Nasir is coming in as the new batsman. The Magicians still have the batsman Amir Sharif, who scored a lot of runs last night. He's a very good batsman and he can single-handedly change the match and get the win for his team. That target is not that high, however, they don't have that much wickets to sacrifice. 2 wickets are gone for the Magician. 44 runs are required in 25 balls. And Qadir is winning the last ball of the over. Giving away only 4 runs, but taking 2 wickets. Very good bowler. This is the bowler that we have to keep an eye on, as he is a star of his team. Imran Nasir on strike. Oh, beautifully bowled. Beautifully bowled. Straight on the legs and the pads of the batsman. Batsman swung, but couldn't be in time. Beautifully bowled. Decent pace. Very well bowled by Qadir. Giving only 4 runs away in his over with taking 2 wickets. What a bowler. The Magicians require 44 runs in 24 balls. If Lemon Cricket Club keeps on bowling like this, it's going to be a long day for the Magicians. Amir Sharif is a batsman that you have to keep an eye on. That guy can single-handedly change the match and win the match for his team. Scored a lot of runs last night. जल्दी जल्दी करेंगे सर फील्डर क्या है सर फील्ड पे जाए सर Amir Sharif on strike. The required run rate has moved to 11 and that's a lot of runs that you need. However, if Amir Sharif can do his thing, it's possible any day of the week. The new bowler, Farid Mukhtar with his next over. Oh, bouncer pulled away from Maximum. Huge 6 above deep square leg. What a shot, picked up so well. Bowling shot is not what you need to do in this pitch. When you pitch it short, the ball comes in slow and gives a lot of time for the batsman to do his thing, and that's what Amir Sharif can do. Keep on bowling those balls and he's going to hit you for a lot of maximums. Beautifully hit. Another short ball. Batsman calls for 2. Beautifully done by the batsman. Quick 2 runs. Beautifully timed it for double, knowing that the field is on at the boundary line. Decent fielding, decent bowling, but bowling full would be more effective. However, decent bowling by Farid Mukhtar. Amir Sharif 10 runs 6 balls when hitting 1-6 with Imran Nasir on the non-strikers end, 0 runs and 1 ball. The Magicians require 36 runs and 22 balls. Bowler coming in, Amir Sharif on strike. Oh, beautifully bowled straight to the hands of the bowler for no run. Playing it smart, playing it slow, knowing that the runs required aren't that high. Amir Sharif playing it smart and slow. The Magicians require 36 runs and 21 balls. Farid Mukhtar, the bowler. Bowler coming in. Oh, that's a wide. Tried to bowl the Yorker, missing the line completely. बॉलर रन अप पे बहुत टाइम ले रहे हैं. The Magicians require 35 runs and 21 balls. So a low total. The bowling side will need to clutch up. Don't give any extras. Ball full. Bowler coming in. It's well bowled.
Amir Sharif leg glances, tries to leg glance it towards fine leg, edges it, hits its pad and goes towards the keeper for a single. Beautifully bowled by Farid Mukhtar. The Magicians don't need to rush anything. The score isn't that high and the bowling side has to take quick wickets. टू 1.4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पर द मैजिशियन को ये मैच जीतने के लिए अगली 19 बॉलों पर 33 रन दरकार। मैच फंस गया। आमिर शरीफ और इमरान नासिर जिधर पर मौजूद हैं। आमिर शरीफ ने 8 बॉल पर 11 स्कोर किए, एक छक्के की मदद से। फरीद अपने बॉलिंग स्टार्ट पर सामना करेंगे आमिर शरीफ। बॉलर 33 फरीद अपने बॉलिंग स्टार्ट पर अच्छी बॉल बीट हुए आमिर शरीफ। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसी तरह तीसरे ओवर के अख्तिताम और 3 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 27, 2 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट 3 ओवर में 33 रन चाहिए द मैजिशियन को ये मैच जीतने के लिए और मेन विकेट उनकी विकेट पर मौजूद है आमिर शरीफ की सूरत पे। अब क्या करने आ रहा है सर? फील्डर सर फील्ड पे जाए ना, क्योंकि जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में वन साइडेड टीम को जीत दिलवाई। अभी मैच में 5 ओवर में 121 रन टूर्नामेंट के हाई स्कोर किए बगैर किसी नुकसान के। अभी देखते हैं कि आमिर शरीफ अपनी टीम को ये मैच जितवा सकते हैं या नहीं। अभी तक तो मैच मैजिशियन के हाथों में है क्योंकि 18 बॉलों पर 33 रन तो बड़ा टोटल नहीं है। जितना लेट कीजिएगा फाइनल में उतने नेक्स्ट कम बॉलर ओवर होंगे। शहबाज अहमद, सर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक स्ट्राइकर में इन्फॉर्मेशन मौजूद दे रहा हूँ इमरान नासिर। कि आप लोग जितना लेट कीजिएगा उतना कम ओवर होगा फाइनल में। शहबाज अहमद बॉलिंग स्टार्ट पर अच्छी बॉल शहबाज अहमद की, लेकिन वाइट बॉल अंपायर का इशारा वाइट बॉल। मैं नमाज पढ़ गया था। सर जी लाइन वाइट बॉल के साथ स्कोर 28। आप ये कर रहे हैं सर वाइट बाहर, वाइट का बाहर है सर इसके। यार इतना बॉल अंदर है, ये कौन सा इतना बॉल अंदर है सर? बॉलर क्रॉस करते हुए वाइट बॉल पर सर जी जितना लेट कीजिएगा उतना ओवर कम होगा फाइनल का। मेरे को कुछ नहीं है तो फायदा आपका फायदा क्या जी? जल्दी करो। जितना लेट कीजिएगा उतना कम होगा। 3 ओवर में 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वाइट बॉल है सर, आ जाए आ जाए सर। चेक नहीं है रिव्यू, नहीं है रिव्यू मेरा लिया, नहीं है रिव्यू। कौन सा नहीं होता है? अब जाए सर, अब जाए। ओरिजिन के प्लेयर मायूस एक इतना बड़ा वाइड में इतना आर्ग्यू कर रहे हैं, आपका फाइनल का ओवर कटेगा बस। चालू करो। चौथे ओवर की पहली बॉल करने के लिए शहबाज अपनी बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद, फेस करेंगे इमरान नासिर। 3 ओवर में 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉलों पर 35 रन चाहिए द मैजिशियन को ये मैच विन करने के लिए और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अच्छी बॉल शहबाज अहमद की तरफ से, बिल्कुल बॉल समझ न सके इमरान नासिर। बीट अच्छे बॉलर हैं शहबाज अहमद और ये इंपॉर्टेंट ओवर है ओरिजिन के लिए। दूसरी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार्ट पर। उम्दा शॉट के लिए, लेकिन सीधी फील्डर के हाथ में 1 रन बना पाएंगे इजीली। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29। 3.2 ओवर्स का खेल हो चुका है। 16 बॉल की इनिंग बाकी। आमिर शरीफ
अच्छी शॉट दे दी आमिर शरीफ ने और देखना होगा फील्डर बॉल को पिक कर सकता है कि नहीं और ये फील्डर के हाथों से होती हुई 4 रन के लिए 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 उमदा शॉट के लिए आमिर शरीफ ने बाउंड्री की जरूरत थी यहाँ पे और आमिर शरीफ ने ये लेग साइड पर 4 रन के लिए खेल दिया 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 2 विकेट के नुकसान पर शहबाज अहमद सोचते हुए कि अब किस किस्म की बॉल की जाए आमिर शरीफ को बॉल करें फील्डर ने कोशिश की थी बट बाउंड्री बचा ना पाए अच्छी शॉट खेल दी आमिर शरीफ ने और देखना होगा सीधी फील्डर के हाथों में बहुत बड़ी विकेट ऑरिजन के लिए आमिर शरीफ की सूरत में जल्दी आएंगे अंदर सीधा फील्डर के हाथों में बाउंड्री से कैच किया कैच कौन लिया इसी के साथ 3 विकेट के नुकसान पर 33 स्कोर द मैजिशियंस का आजा सर बड़ी विकेट का नुकसान हुआ द मैजिशियन को आमिर शरीफ की सूरत में फील्ड पे जा फील्डर फील्डर थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा कल्चर कमेटी के डायरेक्टर मिस्टर ताहा उनके साथ उस्मान भाई हम दोनों को वेलकम कहते हैं आज के इस टूर्नामेंट में और साथ ही माशाल्लाह से लियाकत भाई वेलकम जल्दी आजा सर हम खुशामदीद कहते हैं अब कल्चर कमेटी के मेम्बरान को कि वो हमारे इस टूर्नामेंट में आए और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 40 3 विकेट के नुकसान पर शहजाद और इमरान विकेट पर मौजूद बैट्समैन बॉलर कंटिन्यू राइट नाउ ओवर द स्टंप 12 बॉलों पर 20 रन चाहिए द मैजिशियन को ये मैच जीतने के लिए देखते हैं हॉरिजॉन ये मैच ये रन बचा पाता है या नहीं टेप बॉल में 12 बॉलों पर 20 रन देखने में तो कुछ नहीं लगते लेकिन क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे चल रहा है बैट्समैन ब्रेक होता तो ये सब चीज बॉलर है कदीर तो अपने राइट आर्म ओवर इनिंग का दूसरा ओवर करते हुए इनिंग का 5वां ओवर है और कदीर का दूसरा ओवर वाइड बॉल उम्पायर का इशारा वाइट बॉल इस वाइट बॉल के साथ स्कोर 41 3 विकेट के नुकसान पर मजीद 12 बॉलों पर 19 रन चाहिए मैजिशियन को ये मैच जीतने के लिए नाम क्या
क्या हुआ? आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान में से गुजारिश करूंगा कि जरा कमेंट्री 2 ओवर कितना चाहिए लेके जाओ। कितना चाहिए? 12/19 Ball coming in. Oh, beautifully ball. Batsman swung but couldn't connect. Beautifully ball. एक और dot आ रही है. Qadir with a beautiful stats of 1 over 5 runs and 2 wickets. This match is going to be a one to watch. 19 runs required in 11 balls. This bowler is someone that you have to keep an eye on. The match can go either way. Ball coming in. Oh, beautifully bowled again. Another dot. Pressure on the batsman. What a delivery. What a delivery. Beautifully bowled by Qadir. Another dot. Back-to-back dots in the second last over. All of this is going to rile up and build more pressure on the batsman. They need to keep a strike rate of 100 plus. They have to keep on hitting that strike. Shazad Asghar on strike, 6 runs in 3 balls. Batsman ready? Shazad Asghar on strike. The Magicians require 19 runs in 10 balls. Ball coming in. Beautifully balled again and another dot. 3 dots in a row. All of these dots are going to pile up and build pressure on the batsmen. The Magicians, they need to clutch up and start hitting some boundaries, hitting some maximums. 19 runs required in 9 balls. Beautifully bowled Qadir with his 4th ball of his over, giving away only 1 run that was from wide. Bowler coming in. Oh, beautifully connected, and it's a huge 6. Beautifully connected. Shazad Asghar with a huge maximum. Good ball by Qadir. But what a shot. The Magicians are back in the game with just 13 runs from 8 balls. The Magicians 47 for 3. Shazad Asghar 12 runs in 6 balls. It's going to be a tough match, a very tough match for both sides. They need to be on their feet in this one. छक्का मार दिया, फंस गया मैच. जल्दी जल्दी ग्रफ चेंज करवाओ यार. जल्दी जल्दी. नहीं अभी 13 होगा. जल्दी लेकर आना. बंद हो गया वो. Seems to be a problem on the ground. लोड नहीं हो रहा. Oh, it's a no ball. Qadir seems to have bowled a no ball. महंगी पड़ गई. वही no ball होगा. And it's a free hit. वो भी इसी तरह आ रहे हैं. It's a good chance for the Magicians to clutch up, get another boundary on this. It's a freebie for the batsman. Shazad Asghar has another opportunity of hitting another maximum. Overstep ka. This all will set the result of the game. It's a tough one. Free hit delivery by Qadir. Bowler अच्छा है वैसे, लेकिन bowler coming in. Oh, beautifully bowled. What a delivery! What a delivery! Qadir with 3 dots in this over, getting hit for 1 maximum. Unfortunately, bowled 2 extras, but he's a very good bowler. Very good bowler. Shazad Asghar strong again, but couldn't connect. And the pressure is on both sides at this point. This is what kind of semi-finals you need for tournaments like these. Nailed by him. Shazad has gone strike 12 runs, 7 balls, all runs coming from 2 sixes. Qadir bowling his 5th ball of this over, of the second last over. Bowler coming in. Oh, beautifully bowled again. What a delivery. Qadir, you beauty. What a ball. Pitched up so well. Ball over करा है. And 4 dots have come from this over. 5 dots have come from this over. Unfortunately, bowled 2 extras and got hit for 1/6. But what an over so far for both sides. 2 ball पे छक्का लगा.
Unfortunately gone for 6. Oh, good delivery again. What an over. Khadir clutched up so well after getting hit for a 6 on a no ball. What a comeback from Khadir. Giving away only 12 runs for the 2 overs he bowled and taking away 2 wickets with the economy of 6. 12 runs required in last over. The Magicians can win this and the other team. अब देखिए बहुत ज़्यादा लेट है बॉलर बड़ा This अच्छा था match ये is tough. वो बॉल Right. अच्छा खाया लेकिन 6 दौड़ बॉल Both कराई teams are trying their best, but who's going to come out on top? That's the question we all try कुछ कर on. रहा है, कुछ कर रहा है मतलब सेम जगह पे बीट की है इसने 6 बॉलें बहुत तगड़ा बॉल जाए सर फील्ड पे जाए बैक टू क्लिक बैक करके जाए निकलूं आगे से This is में छक्का मार दिया ना. Next छक्के bowler का is Sajjad हो Afridi, सकता है अदरवाइज ये batting 18 very 19 होते well, तो मुश्किल हो जाना था and अब ऐसा ही एक बॉलर चाहिए 2-3 बॉलें जो Rana निकाल on दे strike for 2 runs, 4 balls. This over is being nailed by the both teams need to be on their top level. फिर वो हैट्रिक भी होगी ना. They can't be giving extras and they can't be getting top balls. It's a match that is going towards हाँ the side. अदरवाइज मुश्किल हो जाता है इनके लिए अच्छा सर जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे सर जल्दी करेंगे बैट्समैन बॉलर चेंज बॉलिंग राइट आर्म ओवर द स्टंप Last over, 12 runs required. It's going to be a tough last over for both sides. Both of the sides need to clutch up at the best team with. कीपर कीपर Side spinner, अभी leg spinner है शायद. Nasser on strike, 2 runs, 4 balls. Bowler coming in. Oh, very well bowled, perfect Yorker. Batsman edges it straight to the keeper. Oh, and that hits the camera. And that's 3 runs. Beautifully run by the batsman and the fielding team. मैंने आपको पहले बोला था सर जी ये हमने पहले ही बोला था वहाँ पे आपने कैमरामैन रखा था मैंने बोला था It's the camera while the umpire throws it. जल्दी करेंगे सर It's a कंटिन्यू controversial करेंगे one. ये हमारी गलती नहीं हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है ये We will get updated with the decisions. अजय सर जल्दी आए क्या ये 3 रन ही है? 3 रन है? बॉल दे सर जल्दी जल्दी हाँ 3 रन है. 5 balls, 9 runs required. The Magicians are doing well. Bowling team need to clutch up, keep on bowling those Yorkers. It's going to be a tough match for both. Last over. 9 runs required, 5 balls. Shehzad Asghar on strike who hit 2 sixes so far. So the ball needs to be on point and bowl those Yorkers. Bowler coming in. Tough match, more tough match. Beautifully bowled, and that is a wide. It's a very expensive one. Last over bowling wide is not a thing the bowler intended. Pitched it well, but the line was a bit off. He needs to clutch up now. 8 runs required from just 5 balls. With Shehzad Asghar on strike. Oh, very well bowled, very well bowled. Batsman swung for it with hopes high, but the bowler bowled it so well he could do nothing, and that's a dot ball. Goes straight to the keeper. What a delivery from Sajjad Afridi. 8 runs required from just 4 balls, 2 boundaries, and that's it. बैट्समैन रेडी हो जा सर Shehzad has gone strike. He needs to connect well. Bowler coming in. चलो हमला तू आजा हमला के साथ उमर आओ बेटा Another lower full toss, catches the call, straight to the fielder's hand. Batsman runs for 2, and that's the umpire takes it upstairs. Beautifully fielded by the fielder, and it can go either way. We'll be updated soon with the decision. A beautifully bowled lower full toss. Batsman tried to swung for it, but it went straight to the hands of long on. Well fielded by the fielder. Good throw. And well taken by the bowler Sajjad Afridi. Good bowling so far, except for the one wide. सर आप लोग अगर फील्ड पे रहेंगे हमारे लिए बहुत आसानी होगा जो भी डिसीजन होगा वहाँ शो कर जाएगा आउट होगा नॉट आउट होगा वहाँ पे दिखाएगा This is going upstairs.
Sajjad Afridi just needs to keep on bowling those Yorkers, and that'll be enough to win the match. Don't bowl any extras. They cannot afford any extras or any boundaries. So it's going to be a tough match for the Magicians. But they can do it. रन आउट का डिसीजन क्या होगा? वही देखते हैं. Will this be a run out? That's the question we all have, and it's going to be answered soon. अंदर आ गया था. क्लोज है लेकिन And that is not out. Imran Nasir survives. Shahzad Asghar back on strike. 14 runs from 11 balls for Shahzad Asghar. 6 runs required in 3 balls. Will Sajjad Afridi be able to stop the batsman from scoring? Or will Shahzad Asghar end this match with the boundary? ऐसी है कि बंदा रेड बना बड़ी जरूरी है. आपको लगेगा. Oh, beautifully balled, edge straight to deep cover coming in. That's just a single. What a beautiful delivery by Sajjad Afridi. 5 runs required from just 2 balls. And Imran Nasir on strike with a strike rate of 100. It's going to be just 5 runs from 5 balls. Sajjad Afridi bowled such a good over so far. 5 runs required from just 2 balls. And the Magicians are in a tough position. 90% of the balls that Sajjad Afridi has bowled were Yorkers, and that's what this ground requires. Ball coming in. Tough one. आखिरी बॉल पे चला गया मैच. ये बॉल चला गया. मतलब 2 बॉल 5 रह गए. बहुत इजी लिया. इजी लिया उन्होंने. यार ये जावेद में अंदाज़ा. बॉलिंग बड़ी तगड़ी की है वैसे इन्होंने. Oh, another Yorker, and that's out again. That's gone. What a wicket! अगेन लास्ट बॉल. पहला सेमीफाइनल में बताया लास्ट बॉल पे 3 चाहिए था. अगेन लास्ट बॉल 5 रन. इसी तरीके से आप सबको पता है कि पहले सेमीफाइनल में भी आखिरी बॉल पर 3 रन रहते थे. क्या मैच जा रहा है. तो छक्का लगाकर वो मैच विन किया था. और अभी भी मैच आखिरी बॉल में 5 रन चाहिए. एक छक्का चाहिए अगर मैच जीतना है तो. अगर चौका बाउंड्री लगेगी, अगर 4 रन हो गए तो बराबर होगा मैच. और अगर 6 लगेगा तो मैच विन करेंगे. तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में मैच आ चुका है इस टाइम. अब देखना होगा कि आखिरी बॉल क्या कर पाता है बैट्समैन और क्या करता है बॉलर. बॉलर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इस ओवर में. इससे पिछले लास्ट ओवर में भी अफरीदी कबीर ने बहुत अच्छा ओवर किया. 6 डॉट बॉलें कराई उन्होंने. एक 9 बॉल का 6 खाया उन्होंने. ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया. कमाल किया यार. ऐसे ही मैचेस होने चाहिए बड़े मैच, जैसे कि ये देखने को मिला. इससे पिछला सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल देखने को मिला. एक बॉल पर 5 रन. शाहजेब हैं स्ट्राइकर एंड पर. सजाद अफरीदी बॉलिंग स्टार्ट पर. बहुत उम्दा ओवर सजाद की तरफ से. 5 बॉलों पर 6 रन दिए, 1 विकेट हासिल की. आखिरी बॉल पर देखना होगा कि 5 रन बचा पाते हैं या नहीं. एक बॉल पर 6 रन चाहिए द मैजिशियन को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए. और 5 रन को बचाना है हॉरिजन ने अगर फाइनल में जाना है तो. बहुत उम्दा जबरदस्त ओवर सजाद अफरीदी की तरफ से. सजाद अफरीदी बॉलिंग स्टार्ट पर फेस करेंगे शाहजेब. मैं कहता हूं शफर करना चाहिए, ऑफ पैपर मारना चाहिए. वो परफेक्ट यॉर्कर्स कर रहे हैं यार. वो बहुत उम्दा ओवर और बहुत उम्दा बॉलिंग सजाद अफरीदी की तरफ से. पहली और हॉरिजन ने ये मैच जीत लिया. दूसरा सेमीफाइनल 2 रन से ये मैच जीत लिया और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए. देखने में लग नहीं रहा था ये हॉरिजन ये मैच विन करेगी. बट ये पाकिस्तान कह सकते हैं कि बहुत अब तक मुकाबला किया. जब 6 ओवर में 7 रन चाहिए था, 7 रन को बचा पाए क्योंकि देखने में ये लग रहा था मैजिशियन की बैटिंग देखते हुए ये लग रहा था कि चेस कर लेंगे. लेकिन बहुत उम्दा चलो 12 बजे कैप्टन आ जाए. कैप्टन
कैप्टन कैप्टन कौन है? कैप्टन आ जाए, इधर आ जाए। सेलेक्ट करें जल्दी। कैप्टन 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 कैप्टन, हरी अप गाइस। हेलो, जल्दी आए। जल्दी का मतलब जल्दी होता है सर, लेट है हम 1 घंटा ऑलरेडी। कैप्टन कौन है? फाइनल आज का टॉस हॉरिजन वर्सेस अली क्रिकेट क्लब। दोनों टीम के कैप्टन को हम बता दे रहे हैं। मैच जो है ये किस टीम में जाएगी? Any comments, Hassan Khalid? अगर लेट होगा तो फिर हमें ओवर रिजेक्ट करना पड़ेगा। कौन बोलेगा? नहीं, लेट है ना काफी लेट है। यूट्यूब पे लाइव है। It's so fun. Wow, match by both teams. क्या ट्राई किया दोनों टीम्स ने? With the match summary here, Horizon Stars win by 2 runs. The Magicians fail to score 60 runs in 6 overs, and they finished off with 57 runs for the loss of 4 wickets, whereas Horizon Stars scored 59 runs for the loss of 8 wickets, leaving them victorious. The player of the match, according to our AI tools, they say it's Lala Sajid Afridi, but yeah, that's it, basically. अब दोनों में से कोई भी जीत सकते हैं, सेम स्ट्रेंथ की टीम है। मुझे लग रहा है वो जीतेगी। अनीसीसी मुझे भी लगा बैटिंग बट ये लोग की बैटिंग बट बोथ आर सेम लेवल, इन लोग की बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, लेकिन सेम लेवल टीम है। एक तो कोई भी कर सकती है ना, मैजिशियन बस सुपर हाई। मैजिशियन बहुत कितनी बैटिंग की आती है बॉल 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 दे दे बॉल सर। कप्तान का बड़े बॉल वो जो लेकिन वो आउट भी हो गया, वो गलत हुआ हवा की वजह से, वरना वो छक्का कर लेता। स्माइल ही थी डल करके ना कि मैं अपने वाले की बंदा रख यार। नहीं देखो ना, बॉलिंग कौन करेगा स्टार्ट? भाई खड़े हो अपनी जगह पे बैठा। Anixisi has won the no, I think has won the toss, has given batting to Horizon I think. Yeah. match update. Welcome to the final of this 8-ball tournament. The final between Horizon Stars and Nick CC. Nick CC won the toss and chose to bowl first. So the Horizon Stars will be batting. नहीं मैं ही क्या है कल सुनो दो गड्डी तो उस तो अलावा जो मर्जी ला लो। हाँ मैं गड्डी तो अपने कहते हैं ना मेरी गल छोटी जगह मुड़ ला लो। मैं क्या गड्डी तो अलावा जल्दी से मैच को स्टार्ट किया जाए। सेट करें। टाइम बहुत शॉर्ट है प्लीज। वैसे भी पता क्या पोजीशन ले ले। 2-2 ओवर खेलने में हर बंदा एक एक ओवर कराएगा। नहीं एक एक जो हम लोग बंदा खेलते हैं तो कल ले ओवर रहने हैं कल करावा वही ओवर मुश्किल है उसमें क्या ये अच्छा होता है ना उस तो एक बॉलिंग करेंगे। बॉल दे आ जाए सर। 12 बाला खेलेंगे सेकंड में 4 तो बोले ना
जी छक्के चौके नहीं चौका कितों लाएंगे चलो ठीक है बड़े छक्के मार क्या नाम है ठीक है आ देवे जरा मैं आज छुट्टी ना एक बार मैं होने तो किनिया बोला दुनिया बोला दुनिया मैं दादा काटने मार के बहुत ओके आ जाए सर डिसाइड क्या हुआ है 4 ओवर ये 6 ओवर क्या नहीं मैं आई एम हैप्पी अच्छा डिसाइड क्या हुआ है 4 ओवर कि 6 ओवर 4 तो नहीं हो सकते वो कह रहे हैं कि शायद 4 ओवर 4 ओवर नहीं है पूछ लिया मैंने टाइम है नहीं है राहत भाई राइट आर्म ओवर द विकेट नहीं वो मैच हो तो शुरू हो तो पहले खत्म कर The two openers of the नहीं अदा ना करो Horizon Stars is Ran ये तो छक्का नहीं and खेले Hassan. हां जी ताड़ा जी गई है टाटा भी छक्का गिना टाटा भी छक्का गिना विकेट टाइट क्या लगता है मेरा 55 टाइट यार मैच स्टार्ट करें फाइनल 4 ओवर है 4 ओवर उसे बैठने जाके आ जाओ उधर मैं आ रहा सर स्टार्ट कर रहे हैं लेट नहीं कर रहे बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट 4 ओवर है सर स्टार्ट करें और कम हो जाएगा बात माने हम लेट है ऑलरेडी स्टार्ट करें आ जाए सर अच्छा ये अब कौन सी टीम है ये बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ऑन द विकेट First bowler missed by lefty, left arm bowling over the the first wicket. over of the final. Here we go. And that's a very good first delivery. Yorker up front, on the outside, bowling on the outside off, and the batsman has completely missed it. The keeper seems to have missed that as well. That was not a very clean pickup. आई डोंट नो 30% है लग जाएगा बता Hassan is on strike now. Oh, bowler has to re-bowl that one again. Something wrong happened in that run-up. इसको लगा लिया इसका किसी भी बैंक से हमें अबू धाबी बैंक का ये चाहिए So far, the key is to bowl really full. Anything short must disappear. And he's bowled full. That is a very good delivery in the stumps, and it's been flicked away towards the onside for a couple of runs. Good bowling and good running. It's a good matchup because Horizon Stars will have to run really hard to make a lot of their runs, because now that all the bowlers know that the best length to bowl on this pitch is to bowl full, and it's not easy to hit a 6 off a full delivery on this pitch. It's going to be a real test of skill and pressure management. एक्स्ट्रा हो गया बॉल है मेरे पास सर ये ले पेमेंट ओके नेम बताए नेम स्टार्ट करें क्योंकि उसकी मैंने वो POS मशीन भी ली है राइट आर्म है बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट 5 टू गो सीनियर शॉट ओके यहाँ होगा टेस्ट के ऊपर हमारे जो जरूरियात होती हैं उसकी जो POS भी मिल गया अब ये चीज़ है Third ball of the over. And that's been pulled away for a maximum! That is humongous! He sent that away! What a beautiful shot! That is a shot of authority by Hassan. He did not let that one go, and he's pulled that away. Junaid has been dispatched for his first delivery. Instantly under pressure. Another shot when he's pulled that away in the gap, and the fielder has fielded. He's done really well towards square leg, and he's fielded that into the keeper's gloves, and that is just one run, just a couple of runs. A very good shot, not the best delivery considering how this pitch has behaved today. You need to get it up and really full. Anything short will be dispatched. It will disappear.
Oh, that's the ball you're supposed to bowl. A very good comeback by Junaid. Bowling it nice and full. That will be byes. Poor keeping. You must be taking those on this situation. वाइड नहीं है सर जी, वाइड नहीं है. At this stage of the game, when you're in a final, you can't be missing those. अंदर से जा रही है. आजा, बैट्समैन लेट नहीं Should have done better. The keeper should have done better. Very poor keeping. Ghufran taking strike now. You have to support your bowlers. Junaid was hit for a 6. A very good comeback after that. Let's see how he follows up. Another full play, and he's edged that towards cover. That will be a couple of runs, and that's a boundary. The fielder seems to have overrun this. This is poor fielding. You need to support your bowlers here. You can't be doing that. नेक्स्ट बॉल आ जाए. 4 balls bowled by Junaid for 12 runs. Misbah had to pull back after those first 2 deliveries, either from an injury or something else. जल्दी आए. But that is the first over of the final. Rising Stars 16 for no loss. नेम से कमेंट्री बॉक्स में आसान आसान होता है. कमेंट्री बॉक्स में कैसे बोले सर जी? ओके सर. आजा इधर आजा सर. बैट्समैन इधर. बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट. ये हमारे बिलाल भाई आए हैं. ये हमारे बिलाल भी हमारे दोस्तों में से हैं. अगरचे आजकल इसका शुमार दोस्तों में मैं सही 10 रन लगा था तो थोड़ा सा आगे खड़ेगा. थोड़ा. ओह सॉरी. Oh, that is a very good line. That's been hit for a 6. Hit straight as an arrow. What a beautiful shot. क्या बॉल अच्छी बॉल रही है. तेज. अली रजा. 22 हो जाएगा. 22. What a beautiful shot. Ali Raza has been dispatched for his first delivery. Hassan has really put up quite a show for us here. Couple of 6s in his first initial deliveries. Oh, he's flicked that away. That could easily go for 4, but that will be a couple of runs. Very good ball and very good shot. Good batting by Hassan. Quite the statement here by the young fellow. Ali Raza bowling 2 balls, giving away 8 runs. Horizon Stars 24 runs for 1.2 overs. Hassan is on strike. And he's flicked that. That's a top edge gone towards point. Cover fielder will have to cover up. There will be a couple of runs. Very good bowling. A very good comeback by Ali Raza. He realizes that there's only one way of going, and that's full and wide. Good bowling by Ali Raza. Very good comeback. Now allowing Hassan to free his arms and use the long handle. Oh, it's a wide to come back after that. After a couple of good deliveries. पहले जो 2 ओवर है ना उन्होंने बहुत बेजोड़ निकाल लेंगे. वो बाद में We'll have to re-bowl that ball again. उनको पहले से निकालना चाहिए. वो बढ़ा गया. The projected score is 72 runs. Let's see if Horizon Stars can reach that. Third ball over. And that's been flicked away into the head, and that's a 6. What a beautiful shot by Hassan. He is really playing an amazing innings. 3 6s now for Hassan. 26 runs of 8 balls.
बेसर से बुरा नहीं तेज Oh, that is a wide delivery. Hassan is toying with the batsman. This has been a great show of authority from Hassan. Very good batting. 3 sixes already with a strike rate of 325. You're enjoying this. Sir की Ali Raza will somehow have to get rid of these last 2 deliveries without going for a boundary. And that's up in the air. Will this be taken towards extra cover? And that's out. Hassan's show has ended. A great comeback by Ali Raza. Beautiful bowling. And that is another wicket. That is the first wicket to go down. Batsman in guys. 34 runs for the loss of 1 in 1.5 overs. He was batting well, but now he has to depart. Playing 1 shot too many. And now he's taking the long walk back to the pavilion. A great comeback by Ali Raza. He has 1 more ball to make up for things, to make up for those a couple of those sixes. Nomi Malik is the next batsman to walk in. 4 4 ओवर है. कुछ यहाँ रखो 4 Batsman bowling right arm over the wicket. 1 to go. Ali Raza probably aiming to take another wicket here now. And he's bowled a 4 and flicked away to edge square leg. Oh, and it's made some misfield, going for a boundary. And XCC has not been great in the field today. They have let down their bowler quite a fair bit. The keeper hasn't been supporting their bowlers. The fielders haven't been supporting their bowlers. They've been overrunning things. They've been missing them through their legs. And that's another misfield and another boundary. Nomi Malik is straight off into the game, scoring a boundary off of his first delivery. It's 2 overs and 38 runs for the loss of 1 wicket with a current run rate of 19 runs. Projected score of 76. 80 पे जाता है लेकिन वो आउट तो गैप पे ये ऑर्गेनाइजर ने 4 ओवर बोला. आप आ रहे बॉलिंग पे. राम Rising Stars are making a statement here. 4 ओवर का मैच है. हम प्लानिंग कर रहे हैं 6 के साथ ये फाइनल मैच है. हां वो टाइम कम है. Coming into this final, guns blazing with a lot of flowery shots. बात करें ना भाई हमने प्लानिंग कर ली है पूरे 6 ओवर की. आप कैसे मैच 4 ओवर का है. सब ठीक है फाइनल है. अब बॉलिंग स्टार्ट. अच्छा लेकिन स्कोर में ना In comes the next bowler, Abu Bakar. He bowled well in the semi-finals. Now he'll have to do it again in the finals and make his team lift that trophy, the final trophy of this tournament. 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लगता है. फर्स्ट मैच पौने 2 घंटा का किया. स्टार्टिंग में ही टाइम दिया. स्लो कर रहे हो आप लोग. अबू बकर प्ले कर. अबू बकर स्टार्ट करें. बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट. ओके. Oh, that's an edge, a bottom edge, and falls just short of the keeper. A good start by Abu Bakar. So far what we've seen is that every bowler in those first 2 overs went for 6 for their first ball. So this is a good change-up for the NECC team. As a full toss has been flicked away for a boundary. Poor delivery down leg side, and that races away to the boundary. आपको गाड़ी कहाँ वो सर आपको निकल गया. हाँ भाई. 42 runs for the loss of 1. Horizon Stars 2.1 overs. They are really making a statement here.
अस्सलाम, कैसे जितना खरीदते हैं? Really playing all their shots here. अल्लाह के Not holding back. दौड़ लग गई चले यार, कोई मसला नहीं है, ऐसे ये तो बैट का अपना मामला, हम तो सही चलो और सब खरीदते हैं आप अल्लाह का। Oh, that's a good comeback. A very full delivery in the stumps. चलो If LBWs were allowed, that was plum. आप बैठे ना And he's hit that straight, and that's another six. A slower delivery in the slot, being dispatched over long there for another sixer. A good shot by Gofran. He is picking up from where Hassan left off, not giving the bowlers any margin of error. This is what you get from a final high quality cricket. A very good shot. And he's bowled a wide. Very good keeping. He stopped that. It's another wide. Abdullah Abu Bakr is under some bare pressure now. Gofran is not holding back. And that's been played on the outside, on the inside of the bat. There'll be a couple of runs. They're ready for a run, but Nomi Malik was not interested. Gofran was not impressed with that effort. Abu Bakr, very good cutback from him. Third ball, he bowled that really well. ग्राउंड फेंक दी है, ग्राउंड फेंक दी किसी ने फेंकी है? हाँ ग्राउंड पे Another full toss down the leg stump. Has that clipped the pad, or is that a wide? And they've taken a couple of runs. Poor fielding. And that's a wide. That's 3 runs for no ball. No balls have been bowled, and that is 3 runs. 3 runs for the Horizon Stars. They're really making a statement here, coming in with serious intent, only scoring 60 runs in the semi-finals, now scoring 42 runs in 2.3 overs. Correction, scoring 45 runs in 2.3 overs. They were not happy with that semi-final effort, so they're coming guns blazing in the final. Oh, he's flicked that away, straight to the man, and that's out! Straight to square legs throat, he didn't have to move a muscle. That's unlucky for the batsman, and that's a very good catch. Is this the break that the Amiq CC team needed to come back into the game? Horizon Stars 53 runs for the loss of 2 wickets in 2.5 overs. Correction in 3 overs. Okay, आजा next bowler. Abu Bakr bowling his first over, 15 runs for the love after taking one wicket. Sir. Okay. Sir, bowler name? Name Usman. बैट्समैन कौन आया? सर जी जल्दी कर लेंगे प्लीज। थर्ड अंपायर वो रिव्यू देख लेंगे। तौकीर है ना? ट्रॉफी से ना शेयर्स अब तक 2.5 ओवर में 53 रन्स और 1 विकेट के नुकसान पर नोमी मलिक सामने बहुत अच्छी बॉल की थी, ऑफ साइड पे हिट करना चाहते थे मगर हिट नहीं कर सके और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया 1 रन के लिए। अबू बकर अपने ओवर की 6ठी बॉल के लिए तैयार, सामने है नोमी मलिक बहुत ही जबरदस्त एवरेज के साथ, बहुत ही एक्सीलेंट ओवर। आउट हो गया बैट्समैन आ जाए सर। और नोमी मलिक आउट। कीपर कौन है सर? कीपर कौन है?
New batsman in place. 54 रन पे 3 खिलाड़ी आउट 3.2 ओवर्स 3.2 ओवर्स में लाला सजाद उस्मान मलिक 2 बॉलें कर चुके हैं, 1 रन देकर अब तक एक खिलाड़ी को आउट किया है। बहुत ही लंबी दुबी बॉलिंग उन्होंने की और वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं हॉरिजन स्टार के बैट्समैनों के आगे। बहुत ही अच्छी बॉल, लेग ब्रेक थी, विकेट कीपर से होल्ड नहीं कर सके और 1 रन के लिए 22 रन। 3.3 ओवर में 55 रन और 3 खिलाड़ी आउट। हॉराइजन टावर्स उस्मान मलिक 3 बॉलों पे अब तक सिर्फ 1 रन दिया है और 1 विकेट। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही अच्छे लेग ब्रेक और ये बहुत अच्छा शॉट खेल दिया है कवर की तरफ, लेकिन बॉलर का सामना हो गया फील्डर के साथ, बॉल का सामना हो गया फील्डर के साथ और इस तरह बैट्समैन इन गाइस फाइनल मैच, चौथे ओवर का खेल जारी। 3 ओवर में 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पर विकेट पर मौजूद गुफरान उल्ला खान, बल्कि गुफरान उल्ला खान अभी कैच आउट हुए हैं और ले आने वाले बैट्समैन बैट्समैन बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट, 2 to go। कमेटी का काम देख के प्रोफेशनली ऐप वगैरह बहुत उम्दा बॉलिंग। अगले साल से बैटिंग में कितनी होगी। सजाद भाई न्यू बैट्समैन कौन आया? 3.4 ओवर्स, अली जैन नए आने वाले बैट्समैन। अपने ओवर की लास्ट बॉल उस्मान मलिक, अच्छी शॉट और कैच आउट हो गए और फील्डर ने बाउंड्री से कैच पकड़ा और 5वीं विकेट गवा दी हॉरिजन स्टार ने। बहुत उम्दा ओवर उस्मान मलिक का, सिर्फ 1 रन दिया इस ओवर में और 3 विकेट हासिल की। 4 ओवर के इख्तिताम पर 55 और 5 खिलाड़ी आउट। 1 ओवर में 1 रन दिया और 3 विकेट हासिल की उस्मान मलिक ने। बहुत उम्दा ओवर उस्मान मलिक का, अपनी टीम को कमबैक करवाया इस ओवर में उन्होंने। हो गया सर। 4 ओवर के इख्तिताम पर 55 स्कोर और 5 विकेट के नुकसान पर। देखो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई, ठीक है ना सर, मैं नहीं है तुम उन्होंने बादल भाई को कंप्लेंट है, ठीक है ना। ऐसे सोच मैं आ रहा हूँ जी दूसरी कंपनी ना आप है जो बहुत उम्दा बॉलिंग। इस ओवर में जस्ट 1 रन बना पाए हॉरिजन स्टार और 3 विकेटें अपनी गंवा दी। बहुत उम्दा बॉलिंग उस्मान मलिक की तरफ से। नए आने वाले बॉलर अबू बकर सोने पे चलते हैं। सेकंड ओवर पे डकवन तो इसमें 3 ओवर का करना पड़ेगा सेकंड ओवर। मेरा मुंह जाता है आगे नहीं देख पा रहा हूँ।
इशारा देखना है कि फील्डिंग क्यों नहीं कर बॉल पर टेप की जाए। टेप करना है, उतारने, सिर्फ उतारने। लाल भाई जल्दी जल्दी बॉल दी जाए, मैच में स्टार्ट किया जाए, जल्दी जल्दी बॉल को ग्राउंड में भेजा जाए। और बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है ओरिजिन के पास, जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा द मैजिशियन को 60 रन पे डिफेंड किया उनका। 4 में 55 ना, बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन थी द मैजिशियन के पास, उसके बावजूद 60 रन भी चेज कर पाए। एवरेज क्या बना 445 पे, वो एवरेज क्या बना तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग, 14 कह सकते हैं, 14 कह सकते हो सकता है। अच्छी बॉल बॉलर की तरफ से, लेकिन इसमें 1 रन का इजाफा हो सकेगा। पूरा बॉल है, पूरा बॉल। जुनैद और हसीब ने ओपनिंग कर रहे हैं अनीक क्रिकेट क्लब की तरफ से। हसीब ने पहली बॉल पर सिंगल लिया। जुनैद फेस करेंगे कदीर को। कदीर बहुत अच्छे बॉलर हैं जिन्होंने पिछला मैच भी अपनी टीम को विन कराया। 6 डॉट बॉलें की उन्होंने गठी 1 ओवर में, एक केप बॉल में। कदीर अपनी दूसरी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार्ट। अच्छी बॉल, और ये जुनैद बगैर किसी रन बनाए आउट हुए। बहुत अच्छा कैच पकड़ा कीपर ने। जुनैद एक बहुत बड़े बैट्समैन थे और बहुत बिग विकेट थी अनीक क्रिकेट क्लब के लिए, लेकिन उनको नुकसान हुआ जुनैद की सूरत में। हॉरिजॉन को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली जुनैद की सूरत में। पहले ओवर की 2 बॉलों के काम पर एक रन पे 1 विकेट गवा बैठे अनीक क्रिकेट क्लब। जुनैद जैसा कि हम जानते हैं पिछले मैचेस में कैसा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में बगैर कोई रन बनाए आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते हुए। अगले आने वाले बैट्समैन फुरकान, जिन्होंने पिछले सेमीफाइनल मैच में अपनी टीम को जीत की खुशी से नवाजा। आखिरी ओवर में 23 रन चेज किए। अब देखते हैं कि इस मैच में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। फुरकान स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद कदीर तीसरी बॉल करने के लिए अपने बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद। फेस करेंगे फुरकान। अच्छी बॉल कदीर की तरफ से, बीट हुए फुरकान। लगातार बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हुए कदीर, पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त ओवर किए। इस मैच का अपना पहला ओवर बड़ा क्लासिक करते हुए 3 बॉल पर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अनीक क्रिकेट क्लब बड़ी विकेट गवा बैठे अपनी जुनैद की सूरत में। फुरकान और हसीब विकेट पर मौजूद हैं। स्ट्राइकर एंड पर मौजूद जुनैद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हसीब। बॉल कदीर के हाथ में, तो उमदा बॉलर हैं हॉरिजॉन की तरफ से। कदीर अपने ओवर की चौथी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार्ट। हेलो
अली बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। फुरकान बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने पिछला मैच अपनी टीम को जितवाया। उम्दा बॉलिंग कदीर की तरफ से, बहुत अच्छा कमबैक किया कदीर ने इस बॉल पर, बिल्कुल बॉल को समझ न सके फुरकान, बीट हुए। अली आए मैनेजमेंट। कदीर अपने ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्ट्राइक पर बढ़ते हुए, लेकिन लगता है इंजर्ड हो, लेकिन जज्बा है, फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, लेकिन हिम्मत करनी होगी उनको, क्योंकि टीम को उनकी जरूरत है। सेमीफाइनल में भी उन्होंने अपनी टीम को विन कराया। सेमीफाइनल एक बिग टीम के अगेंस्ट द मैजिशियन। हौसले बुलंद हैं कदीर के, अपने ओवर की लास्ट बॉल करने के लिए बॉलिंग शॉट पर आते हुए हम रेस करेंगे फुरकान। लेकिन थोड़ी परेशानी हो रही है कदीर को लास्ट बॉल करने में, और टीम को जरूरत है उनकी। अच्छी बॉल, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन थोड़े दूर थे जिस वजह से 2 रन का इजाफा, रन आउट हो सकते हैं, रन आउट हो सकते हैं। अंदर का फैसला देखना होगा। अबे मेन प्लेयर गया इनका। अंपायर का फैसला देखना होगा कि ये रन आउट है या नहीं है। ये बिग विकेट है, हो जाएगी ना जब हम ट्रॉफी दे देंगे फुरकान की सूरत में। चैंपियंस वाला बोर्ड इधर ले आना, जैसे जिस रुख पे रखा हुआ है ना उसी रुख पे उठा के ले आना, तब वो अभी आने वाला है, देखना होगा तस्वीर वाला वो तस्वीर ले कि रन उठाई या नहीं, फोटो भी आ जाएगी उसमें। सही, फुरकान की सूरत में बिग विकेट। पहले बॉल पर जुनैद आउट हुए, पहले ओवर की आखिरी बॉल पर फुरकान रन उठाए या नहीं, ये फैसला भी होगा भाई। कोई चीज भी है खाली से मुझसे पूछो। जी जी मैम। डिसीजन पेंडिंग। कंपनी है ना, अंपायर का फैसला देखना होगा। वो खाएगा तू? और ये आउट, ये रन आउट हो गए। बहुत उम्दा थ्रो की फील्डर ने, और कीपर ने उनका साथ दिया। याली बबल खा, याली बबल खा। दूसरा रन बनाने के चक्कर में अपनी विकेट गवा बैठे, बिग विकेट अपनी गवा बैठे फुरकान, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे। अबे एक और ऐसी बबल है, 6 घंटे भी आप नए आने वाले बैट्समैन उस्मान मलिक, एक और दिखाओ। कैप्टन भी हैं और बहुत उम्दा बैट्समैन भी हैं। एक उन्होंने अपने कंधों पर आज के मैच को लिया और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। पहले ओवर के नुकसान पर स्कोर 9, 2 विकेट के नुकसान पर 18 बॉलों पर 47 रन चाहिए मैच जीतने के लिए अमीर क्रिकेट क्लब को 40 रन के अगेंस्ट। बॉलर है फरीद मुख्तार ने भी बहुत अच्छी ओवर की अपने पिछले मैच में, सेमीफाइनल में 2 ओवर बहुत क्लासिक ओवर किए। अभी भी टीम को से बड़ी उम्मीदें व्यवस्था हैं, देखना होगा इस मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। फेस करेंगे उस्मान मलिक फरीद को। अब्दुल बासित ऑन ट्रैक। दूसरे ओवर की पहली बॉल। मेन स्पॉन्सर लेकिन खबरदार वाला ना यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं रहा हो सकता। लेकिन आपने मेन स्पॉन्सर, लेकिन हुआ क्या उम्दा बॉल उसके बाद फरीद की तरफ से, बिल्कुल बॉल समझ सके उस्मान, बीट हुए। ठीक है, जो नाम लेंगे ठीक है। और ये सर हसी फेस कर रहे हैं, एक मिनट, बिल्कुल बॉल को नहीं समझ सके, बीट हुए। नहीं लेंगे, आपकी कंपनी का नाम लूंगा और फिर उसके वो बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे। दूसरी बॉल लेकिन आपका नाम यहाँ लिखा फरीद की तरफ से फेस करेंगे। ट्रॉफी दे रहा, ट्रॉफी नहीं होती, ट्रॉफी है नहीं तो उम्दा शॉट खेल दी, लेकिन फील्डर मौजूद है, देखना होगा दोनों फील्डर आपस में फैसला नहीं कर सके ये कैच किसका बनता है। 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों बैट्समैन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 1.2 ओवर्स में 11 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर कैच बनता था, लेकिन कंफ्यूज रहे दोनों फील्डर्स। आउट हो गया, आउट। फरीद अपनी ओवर की तीसरी बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद, फेस करेंगे हसीब।
बहुत उम्दा बॉलिंग फरीद की तरफ से। ये लॉजिस्टिक्स है, क्या है ये? लॉजिस्टिक्स अल इकाब। बहुत उम्दा बॉलिंग फरीद की तरफ से। बिल्कुल बॉल समझ ना सके हसीब, बॉल पर कोई रन नहीं। बस आप कमेंट्री क्यों नहीं करते? 11 रन तो 2 डब्बे बॉल के लिए थे, 2 आउट मैंने ले लिए थे। 2 विकेट गवा बैठे हैं हनीफ क्रिकेट क्लब, दोनों मेन प्लेयर्स की विकेट। स्पॉन्सर मेन स्पॉन्सर नहीं हो सकता, ये तो सिल्वर या गोल्ड। अच्छी बॉल, अच्छी शॉट खेली, लेकिन 1 रन का इजाफा कर पाएंगे या इनको डायमंड कर दो, इसे गोल्ड कर दो। दूसरे ओवर की 4 बॉलों के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 12, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या पागल बनाया। अंपायर नो बॉल को चेक करते हुए अगर ये नो बॉल होती है तो बहुत जबरदस्त चांस होगा इनके लिए फ्री हिट पे अब प्रेशर से बाहर निकलने का। एक लंबी हिट करने का मौका मिलेगा इनको, उस्मान मलिक को। लीगल डिलीवरी, बहुत ज्यादा। दूसरे 4 बॉलें, 5वीं बॉल करने के लिए बॉलिंग स्टॉप पे मौजूद फरीद फेस करेंगे उस्मान मलिक। ये इनका है ना, अच्छी बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं थे, थोड़ा दूर थे और 4 रन के लिए खेल दिया उस्मान मलिक ने। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16। दूसरे ओवर की लास्ट बॉल करने के लिए फरीद अपनी बॉलिंग स्टार की तरफ बढ़ते हुए 13 बॉलों पर 40 रन चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि लीग क्रिकेट क्लब ने आखिरी अपने तीनों मैचों में आखिरी ओवर में 25, 24, 26 चेस किए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छी शॉट खेल दी और देखना होगा फील्डर मौजूद है और 6 रन के लिए खेल दिया बाउंड्री से बाहर बॉल। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर में 22 स्कोर, लास्ट 2 बॉल पर 2 बाउंड्रीज। पहली 4 बॉलें बहुत अच्छी की फरीद ने, लेकिन अभी आखिरी 2 बॉल्स पर 2 बाउंड्रीज पड़ी इनको, बहुत महंगा ओवर पड़ गया। 12 बॉलों पर 34 रन चाहिए अनीक सीसी को ये मैच जीतने के लिए, फाइनल मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 के चैंपियन बनने के लिए 12 बॉल पर 34 रन रिक्वायर्ड है अनीक सीसी को। 2 बॉल पे कितने रन चाहिए? 2 बॉल 34। टेप बॉल में 34 रन 12 बॉल पर कुछ नहीं है, देखा जाए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ना बनने पर 12 बॉल पर 10 भी नहीं बन सकते। लेकिन देखना पड़ेगा बॉलर बॉलिंग कैसी करते हैं। 12 बॉल पे कितने? 12 बॉल पर 34 रन चाहिए अनीक क्रिकेट क्लब को ये मैच जीतने के लिए। शहबाज अहमद बॉलर हैं, फेस करेंगे हसीब। अच्छी बॉल शहबाज अहमद की, फील्डर बाउंड्री पर मौजूद, 1 रन का इजाफा हो इस बॉल पर। गुड बॉलिंग, पूरा नहीं मारना। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23, 2 विकेट के नुकसान पर। 11 बॉलें 33 रन चाहिए अनीक क्रिकेट क्लब को चैंपियन बनने के लिए। अच्छा, अपना मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कैच हो सकता था। हमने कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं। उम्दा बॉलिंग शहबाज अहमद की तरफ से, जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि ओरिजिन के पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन आता है, उसका फायदा उठाया जा रहा है इनकी तरफ से। जबरदस्त बॉलिंग शहबाज अहमद की तरफ से। 2.2 ओवर्स के इख्तिताम पर स्कोर 24, 2 विकेट के नुकसान पर। शहबाज तीसरी बॉल करने के लिए अच्छी शॉट खेल दी और 6 रन के लिए खेल दिया असीब ने। 6 रन की अशद रोकी को 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2.3 ओवर में। असीब ने जबरदस्त 6 खेला, बिल्कुल स्ट्रेट पे
9 बॉल पर 26 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए नी क्रिकेट क्लब को। लास्ट 3 बॉलें बड़ी इंपॉर्टेंट है शहबाज अहमद की। उम्दा शॉट के लिए 4 रन के लिए खेल दिया, वो जबरदस्त जॉब निकाला ड्राइवर, बहुत बड़े शॉट के लिए 4 रन के लिए खेल दिया हसीब ने। 4 रन के साथ स्कोर करते हुए 34 आखिरी 8 बॉलों पर जस्ट 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए। ऐसा लग रहा है कि चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता अनीक को। लेकिन पिछले मैच में भी बहुत उम्दा बॉलिंग की आखिरी 2 ओवर्स में, देखना होगा अभी क्या करते हैं। बेटा सारी हो गई, सारी बातें हो गई घर पे, सब कुछ हो गया, बंद कर दो नेट। उम्दा शॉट खेल दिया सीधे, कैच हो सकता है लेकिन फील्डर बॉल को नहीं समझ सके, नहीं जज कर सके 4 रन के लिए मिस फील्डिंग की वजह से। इन लास्ट 3 बॉल पर 3 बाउंड्रीज, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन किए। तो चाहिए जस्ट 7 बॉल्स पे 18 रन चाहिए अनीक क्रिकेट क्लब को चैंपियन बनने के लिए। बहुत उम्दा बैटिंग हसीब की तरफ से, बहुत उम्दा बॉलिंग की पहली लास्ट 3 स्टार्ट की 3 बॉल्स, लेकिन बहुत जबरदस्त कमबैक किया हसीब ने जो कि 9 बॉल पे 19 रन पे क्रीज पर मौजूद हैं 1 छक्के 2 चौकों की मदद से। बॉलर थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। शहबाज बॉलिंग स्टार में मौजूद, अपने मन की आखिरी बॉल फेस करेंगे हसीब। उम्दा बॉल फील्डर बॉल के नीचे मौजूद, लेकिन बॉल को नहीं समझ सके। इस मैच में हॉरिजन की तरफ से कुछ फील्डिंग अच्छी देखने को नहीं मिल रही, जिस वजह से टफ होता जा रहा है इनके लिए। 2 रन लेने के लिए बासानी 2 रन लिए हसीब ने। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। आखिरी ओवर में कितने रन? लास्ट 6 बॉल्स पर 16 रन अनीक क्रिकेट क्लब को चाहिए चैंपियन बनने के लिए। लास्ट 6 बॉल पर 13 रन रहते थे सेमीफाइनल सेकंड में, हॉरिजन ने नहीं बनने दिए, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। बॉलिंग अच्छी है हॉरिजन के पास, देखना होगा लास्ट ओवर किसको देते हैं। सजाद अफरीदी जिन्होंने अपना लास्ट ओवर बहुत उम्दा कराया था पिछले मैच में सेकंड सेमीफाइनल में, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कैप्टन की। देखना होगा फाइनल मैच में अपना लास्ट ओवर किस किस्म का करते हैं, उसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं या नहीं। फेस करेंगे उस्मान मलिक। 6 बॉल पर 16 स्कोर, मैच जीतने के लिए चाहिए अनीक क्रिकेट क्लब को। 16 डिफेंड करने एक ओवर में सजाद अफरीदी ने, जो कि अच्छे बॉलर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डिफेंड कर चुके हैं सेमीफाइनल में। बहुत अच्छी कॉमेडी का मुजाहरा करते हुए। क्या अभी स्कोर क्या वैसे? 20-40 हो गए। 40। 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 40, 2 विकेट के नुकसान पर। और अभी 12 बॉल, एक ओवर 6 बॉल पर 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए अनीक क्रिकेट क्लब को। बॉलर हैं सजाद अफरीदी। मारते हैं साले, कितना चाहिए? आखिरी ओवर में ही मारते हैं। अरफात इन्होंने क्वालिटी यही ताबई 23 मार रहे हैं। ताबई इन्होंने आखिरी 3-4 मैचों में आखिरी ओवर में 23 से 24 अरफात ये कुछ नहीं है। तो 16 अभी तो देखने का मजा नहीं, पर वो बैट्समैन नहीं है। लेकिन बॉलर अच्छा है इनके पास। पिछले मैच में देखे इसने कैसी बॉलिंग की आखिरी ओवर में, देखते हैं अभी क्या करता है। एक जरा ग्राउंड दिखाते हुए यहाँ हमारी वीडियो बना सकते हैं। लास्ट ओवर करने के लिए सजाद अफरीदी बॉलिंग स्टार पर मौजूद, फेस करेंगे उस्मान मलिक। बाबा कम दिखाओ ग्राउंड, बाकी यहाँ ले आओ। उम्दा बॉल फील्डर बॉल के पर मौजूद, 1 रन का इजाफा हो सकेगा इस बॉल पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41। 5 बॉल पर 15 रन चाहिए अनीक क्रिकेट क्लब को जीतने के लिए। दूसरी बॉल करने के लिए सजाद अफरीदी अपनी बॉलिंग स्टार पर मौजूद, फेस करेंगे हसीब। तो कैप का है वो बासित के पास टीम का नाम क्या है? अरफात
अच्छी बॉल, उमदा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सजाद अफरीदी की तरफ से बिलाल भाई एक रन का इजाफा, एक मिनट इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ा हुआ 42। और सर घुमाओ Last वो भी दिखाओ 4 ट्रॉफी पूरा 14 रन। यूं दिखाते हो तो यहाँ तो रुक के फिर ट्रॉफी बहुत उमदा बैटिंग और बहुत उमदा बॉलिंग सजाद अफरीदी की तरफ से। बड़ी इंपॉर्टेंट बॉल है ये, यहाँ लिया अच्छी बॉल है लेकिन फील्डर बॉल के नीचे मौजूद, देखना होगा। गुड फील्डिंग, 2 रन का इजाफा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बैट्समैनों की 3 बल्ले पर 3 के दरमियान 3 बॉल पर 12 स्कोर। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेमीफाइनल जैसी, सेम बॉलर सामने सजाद अफरीदी। इसको वहाँ बराबर में आके रखो। कुछ भी हो सकता है, 3 बॉलों पर 2 छक्के, कमेंट्री पहले पब्लिक को हिला दे। 12 को बराबर में 3 बॉलों पर 12 रन चाहिए, 2 छक्के, सब लोग खड़े हो जाए, पब्लिक को खड़े कर 2 छक्के, बहुत उम्दा, टीम को सपोर्ट करें, ग्राउंड में आ जाए। बहुत उम्दा बॉलिंग सजाद अफरीदी की तरफ से, बहुत उम्दा बॉलिंग और ये रन उठा सकते हैं, देखना होगा फैसला उम्दार का। 2 रन का इजाफा इस बॉल पर, 2 बॉल पर 10 रन। मैच बहुत जबरदस्त पोजीशन में, कौन बनेगा चैंपियन, हॉरिजन या अली क्रिकेट क्लब। 2 बॉल पर 2 बाउंड्री अली क्रिकेट क्लब को चाहिए। सपोर्ट करें अपनी टीम को, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बाउंड्री पर आ जाएं, बाउंड्री के करीब आ जाएं, सबसे गुजारिश है। मैच के आखिरी लम्हात, 2 बॉल पर 10 रन, कौन बनेगा चैंपियन? उम्दा बॉल, बहुत उम्दा बॉल सजाद अफरीदी की तरफ से, 1 रन का इजाफा, 1 बॉल पर 9 रन, बहुत उम्दा बॉलिंग सजाद अफरीदी ने तो फिर अपनी टीम को जितवाते हुए सेमीफाइनल की तरह। लास्ट बॉल, कैप्टन ने इन पे एतमाद किया और उन्होंने अपने कैप्टन के एतमाद को पूरा करते हुए आखिरी बॉल पे 8 रन चाहिए, बहुत उम्दा बॉलिंग, जब 6 रन दिए, आखिरी बॉल पे 8 रन। इधर लाओ सारी बॉलें। अच्छा इसके बाद अली ये बॉलें कनाडा अपनी ओवर में ये गाड़ी में जाएगा। जबरदस्त और ये चैंपियन हॉरिजन ये सोचे हॉरिजन अभी एमके नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब तक थे वो फाइनल में आने के और फाइनल पहुंचे, लेकिन दोनों तो अपनी टीम में खेली, लेकिन एक टीम को जीतना होता है, वो टीम है हॉरिजन जिसके लिए चैंपियन बनी सीजन 1 की। हॉरिजन का पूरा नाम क्या है? हॉरिजन सुल्तान भाई, सुरेश भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप उस बात के पहुंचे और फाइनल तक गया, अच्छा मुकाबला रहा, लेकिन किसी एक टीम को जीतना होता है, वो टीम है हॉरिजन। हम हॉरिजन को मुबारकबाद पेश करते हैं।
पैड के टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन 1 के चैंपियन। ठीक हो कहना क्या चाहते हैं आप? दूसरा बोल रहे हैं ना, अभी एक नहीं एक बोल। भाई कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है आज के इस टूर्नामेंट के फाइनल में? आज का इस टूर्नामेंट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। हमने बहुत अच्छा गेम देखने को मिला हमें। अभी आप बताएं, आप ये बताएं कि अभी आपको बताएं, आप ये बताएं कि जो जीतने वाली टीम में कितने गोल से जीती है? जीतने वाली टीम ने अच्छे गोल किए।
बस ये वाली बंद करें। डार्क आएगा थोड़ा मधु करें टीम्स को आज इसको मैं साथ में रखूँ। तमाम टीम से गुजारिश है कि वो यहाँ स्टेज पर जिस में आए कि हम लोग पैस डिस्ट्रीब्यूशन सामने जो है स्टार्ट करने वाले हैं। NXCC और हॉरन स्टार्स तमाम दोनों टीम से दरखास्त है कि वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आएं ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर सकें। वहाँ पर अदर फंक्शन का ये वो पंखे को पीछे ताकि वो उनकी स्टैंडिंग ना छुपे, थोड़ा सा उनकी स्टैंडिंग ना बहुत छुपे और हमारी भी ना छुपे। दोनों टीम बोल रही हैं यहाँ पर नहीं वो सही हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी लंडोनी लाइट्स वो लाइट नहीं आ रही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई टेक ऑल आउटडोर टूर्नामेंट सीजन 1। What a wonderful evening! What a wonderful tournament! A lot of unexpected things. बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बाद हम सोचते थे कि शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, आउट क्रॉस कर दिया आप लोगों ने दिखाएंगे कि नहीं। बहुत ही जबरदस्त दुकान में देखने को मिले। कल का दिन से सेंचुरी कर चुका और आज का दिन बॉलर्स का दिन था। कल जिन मैंने सेंचुरी आई, आज जो टीमें सेंट्रल से बाहर हुई। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं तलावत खान का सारी रसूल आपसे दरखास्त है कि आप तलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर सारिन। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप
दावत दूंगा हेड ऑफ कल्चर कमेटी ताहा भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम हेड ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी मोहतरम रसूल साहब और मोहतरम खालिद भाई और मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले आप सबको इस कामयाब टूर्नामेंट के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। हकीकत ये है कि रात का इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा है और इस रात के इस अंधेरे में आपने इस बयाबान जंगल के अंदर रौनक लगा रखी है और कुरान की आयत जब तिलावत की हाफिज साहब ने कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि वो सबसे अच्छी बात और किसकी होगी कि जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में रात के इस पहर इस सबक को भी हमने दोहरा लिया कि हमें अपने जहन में मकसद को भी वाज़ेह करना है कि हम मुसलमान हैं और हमने अपना जो दावत है वो अपनी आगे तक पहुंचानी है। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट हुआ, इस टूर्नामेंट के इस कामयाब इनाकात पर सबसे पहले उस टीम को मुबारकबाद देने की जरूरत है जिसने इसके इंतजाम किया, उनके लिए भी आपकी तरफ से बहुत क्लास होनी चाहिए। अजी साथियों, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई इस तरह की बहुत सारी सरगर्मियों को फरोग देता है और जिसके अंदर जिस तरह का टैलेंट है उसको वहां पर वो आके अपना पेश कर सकता है। एक स्पोर्ट्स कमेटी है जो कि आपके सामने टूर्नामेंट आपके सामने रखा और माशाल्लाह बेहतरीन इनाकात हुआ, आप लोग देखा भी इसका। इसी तरीके से वहाँ पर हमारे पास एक कल्चर कमेटी मौजूद है, इस तरह हमारे पास वहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है, आप वहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। एक वहाँ पर हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का इदारा है पाकिस्तान मेडिकल सेंटर, जिसमें जो कि बिल्कुल नो लॉस और नो प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा है। आप उसको भी वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इस तरह का हमारे पास वहाँ पर बेहतरीन किस्म की चीजें वहाँ पर मौजूद है। आपके पास जो भी सलाहियतें हैं वो बेरोजगार लाते हुए आप वहाँ पर आके इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कमेटी है ये क्रिकेट के अलावा बहुत सारा टूर्नामेंट का इनाकात वहाँ पर करती है। और जो कल्चर कमेटी है उसमें आपने तो ये हमारा जो यौम आज़ादी का प्रोग्राम हुआ और अभी गुज़श्ता हमारा एक थिएटर हुआ वहाँ पर, उसमें भी जो लोग हिस्सा ले सकते हैं वो आके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका जिस चीज में भी टैलेंट है वहाँ पर आके निखारिए और अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए वहाँ पर नाम जो उसका वो रोशन कीजिए। आखिर में इस टूर्नामेंट में